Recording in progress. Good afternoon, everyone, respected members, our esteemed speaker, and dear participants. I, C. Aman Rajput, am honored to moderate this session on Become an AI powered CFO Tapping Global Market. On behalf of the Development of International Trade and in Services and World Trade Organization Directorate of ICAI, I extend a warmly welcome to all of you. In today's rapidly growing, evolving business environment, the role of CFO is no longer limited to financial reporting and compliance. An AI powered CFO is trained as a strategic business leader, leveraging artificial intelligence for predictive analysis, real time decision making, risk management, and global scalability. Thus, becoming an AI powered CFO is not just about adopting technology, it's about transforming the finance function into future ready, globally competitive engine of value creation. It gives me great pleasure to introduce our distinguished speaker, CA Priya Sharma ma'am. She is a founder of Actvi- Actversive, where she leads AI driven financial planning, compliance, and automation solution. With a career spanning nearly a decade, she has also served as a partner at Surya P. Sharma and Company and strategic advisor to industry leaders. Her expertise lies in artificial intelligence, automation, financial strategy, and real estate investment, making her true innovator in bridging finance with technology. She is also associated with ICAI as an AI chartered accountancy, company secretaryship, and law graduate, along with international recognition as a CPA Australia member. Her journey reflects a blend of finance, technology, and strategy, positioning her uniquely to guide us on becoming an AI powered CFO and tapping global market. We welcome you, ma'am. Thank you, Amanji, for such a great welcome. And a very good afternoon, everyone. It is a privilege to be here today to talk about something that is truly transforming the way finance and business strategy are managed globally, which is AI powered CFO services. So, before we dive in, obviously, Amanji, told what I do and about me, so I don't need to brag about myself on my own. But yeah, without wasting any time, let's start dig into our topic directly. And it's going to be something which will not just be theoretical. I will give you a glimpses of what AI tools can be used and how AI powered financial services can be provided to people outside as well. So today we'll talk about whether you are a chartered accountant already working with international clients, or you're someone who aspires to step into foreign markets. One reality is clear that every market has its own regulations, licensing hurdles, and entry barriers. So, securing licenses in every country is neither feasible nor practical. And also, it is not possible for most professionals economically, also, and firms. So, this is where the concept of AI powered CFO becomes not just relevant but necessary. Obviously, we'll dig down in this when in our presentation as well. But before getting into the presentation, I want to give you a little brief of why is it important at all. Okay. So, since as I said, that an AI powered CFO, is the need of the hour. So instead of limiting ourselves to what our local license actually allows, AI enables us to provide real time financial insights, compliance support, and very rightly told by Amanji also that for forecasting, real time forecasting, strategic decision making across borders, and without physically setting up your office, shop, or going through complex licensing processes in every jurisdiction. Because we also know that if a professional provides any accounting services or any auditing services, attestation services,
Those are not covered here. We are only providing CFO services, which I will later on also cover what CFO services basically are, and how what AI is, and how these two combined will help us in tapping the foreign market. Or if we are already in the foreign market, how can we actually excel better than others? So, let me give an example before starting our PPT. That, for example, a business in London, it is struggling with cash flow, and they want to automate their cash flow analysis in the real time. So AI driven forecasting and advisory from a professional like you, like ourselves, as chartered accountants here, can actually benefit them. And why can't we as chartered accountants pace up with that skill, upskill ourselves in a manner where we can charge better, and we can also present ourselves better from the traditional ways of practice or traditional, provision of services that we used to earlier. Okay, so this is superior because it allows us to operate at a strategic level. It allows us to offer intelligence, not just bookkeeping and the services that we've been providing. With zero bookkeeping and zero software or QuickBooks, we need to go beyond that. Okay, because now today when we have AI with us, we can go beyond that also. I'll touch upon what AI is also. So we are not restricted to borders. That is one thing. We now have become partners in growth, efficiency, and foresight. Also, a recent amendment, a recent advancement came in, I think, in last month, when Nanda sir only, told about the India UK FTA agreement that has happened, which had made Indian CAs, which has made it easier for the Indian chartered accountants to have a formal recognition and easier market access in the UK for accounting and financial services. So imagine when such type of trade agreements are happening, why are we behind? Why are we not leveraging ourselves with tech so that we can also access these markets, tap into these markets, and provide great services that we want to? Okay, so the requirement today is clear. If you want to scale internationally, if you want to deliver value that goes beyond local compliance, and if you want to stay competitive in a globalized service economy, you must embrace AI powered CFO services. So, how to become an AI powered CFO services officer? First, we'll start our PPT, and I'll just brief what all I'm going to cover. First of all, what is AI and what does it mean for finance? I know that there might be certain people who haven't heard about artificial intelligence, which is a bit unbelievable, but then there are so many people who've not used Gen AI per se. Then, how AI delivers better outcomes, what CFO services actually are, then, path to become AI powered CFO, top capabilities for CFO, how to use AI to tap into foreign market if we are not already working in the foreign market, and then key takeaways. It's a lot of agenda for 1 hour, but I'll try and succumb it. Obviously, I cannot make you an AI powered officer or chief financial officer for that matter in just 1 hour, but I can give you a glimpse, and you can use it well for your advantage if you really want to. So there is no mantra in this webinar that I'm holding that I'll give it to you and you will, from tomorrow only you will start providing your AI services or whatever services you are already giving to your clients. But all I can give you is I can make you aware of what all is available in the market and how can you actually use it. So first of all, what artificial intelligence is, I have said it many times in my other webinars as well, but today I want to, I don't know whether how many of you know artificial intelligence, but I will speak from the beginning only. It came in 1950 by a person named Alan Turing, who invented this term only, this terminology only. It was coined, wherein he came up with with a thought process that what if we make machines also as smart as humans are? And then the entire revolution came. Obviously, when आप AICA level 1 का course करोगे तो AI के बारे में ज़्यादा वहाँ पढ़ सकते हो, तो ज़्यादा deep में I will not go into it. But I can tell you that artificial intelligence basically it enables computers, machines to think, learn, and solve problems like humans do. Just imagine how we would manually write formulas in our notepad or notebook.
and solve each and everything. Machines are doing it. And now machines also have the logic behind it, how to do it. For example, weather forecasting. It's a great example of machine learning, which is again a part of artificial intelligence. So, artificial intelligence is one, technique or a model that came up with a with a technique to enable computers or your machines to think, learn, and solve problems like humans do. Very simple. Weather forecasting. Our Swiggy, whenever we order something in Swiggy or Zomato, they know our patterns. They read from our patterns. So these models are trained, these machines, how they are trained, they are fed with millions and trillions of data, text. And then on the basis of those texts available all over the web or libraries or anywhere, they're able to predict the next possible outcome. So, for example, weather forecasting apps में पीछे machine learning कैसे work करती है? That when we they are able to tell us whether it'll rain in the next few days or in next few hours for that matter or not. Okay, so that is your artificial intelligence ka part only. Then your facial recognition, that is deep learning, that is again artificial intelligence. But now in 2020 came your generative AI, which is another branch of artificial intelligence, which blasted the artificial intelligence, whole the world of artificial intelligence, when it is able to create and generate output. Abhi tak, it was only able to predict. Now it is also able to generate output. So, for example, when I ask my artificial intelligence tool, for example, Chat GPT, Claude, Perplexity, or for that matter, Google's Gemini, when I ask them any question, they don't just dig in the library, they are able to produce an answer on the basis of that, just like a human applies its brain and gives an answer. So imagine why I'm telling this is because just imagine you know how powerful a tool is. Now you know that when a tool is so powerful that if I train this tool, it is able to generate output on its own. It can work how I work. You can create a mini or a parallel version of yourselves, or you can also do a lot of other tasks like automations with the help of it. So, which is why it is very important to understand that this artificial intelligence is capable of also transforming your practice as a chartered accountant. Otherwise, we always think that how is it useful to us? We are not engineers. We don't know how to code. We don't know. We've not been using tech. Believe me, we've been using tech like anything, from phones, from smartphones. Even a person who's not even educated is able to use smartphones and able to make reels and edit those reels and put it on the social media platform also. Everywhere we are surrounded by tech. And artificial intelligence is another that amazing branch which can help us to scale पुरानी सारी चीजों से जो कि रूटीन चीजें हैं मोनोटोनस चीजें हैं physical tasks हैं which makes us really difficult to look at the productive side. We can automate all those tasks with the help of artificial intelligence. Why? Because it is able to generate an output. जब वो आउटपुट जनरेट कर सकता है तो हम उससे हमारी प्रॉब्लम उसे हमारी प्रॉब्लम देकर कि ये हमारी प्रॉब्लम है, यू सॉल्व माय प्रॉब्लम सो दैट आई कैन गो टू डू बिगर प्रोडक्टिव वर्क. ओके. So common examples like recommendation engines, that's just what I said. For example, Swiggy, Zomato, they give you recommendation on the basis of what you ordered last time. So that is what artificial intelligence is. Then fraud alerts, chatbots, automated accounting, automatically your invoice is pulled from your drive and then it goes directly, it is posted in your Zero, QuickBooks or whatever Tally software, whatever you're using. So imagine artificial intelligence wahan pahunch gaya hai. Now you start exploring artificial intelligence, you know how to use these tools, and now you can inculcate it in your practice, and then you can also pitch it to your clients that you know why I am better than other people is because I use artificial intelligence and most of my services are automated, most of my tasks are automated. So I can give you better services in better time. आपके पास उसको सिर्फ वाउच करने का टाइम रहेगा, उसको वेरीफाई करने का टाइम रहेगा, विच इज वाई वी आर हियर ह्यूमन इन द लूप. हम हमेशा रहेंगे. सब चीज तो ऑटोमेट हो नहीं सकती है, बट जो टास्क हमें ऑक्यूपाई करके रखते हैं हम वो ऑटोमेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. वी विल सी विद ऑल ऑफ दैट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल क्या क्या कैपेबिलिटीज हम इसकी यूटिलाइज कर सकते हैं. बट फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज
basically artificial intelligence capable of doing. So we know that it is capable of generating any output whatsoever, also images, podcasts, your clones, wherein a person speaking just like you, talking just like you, can enter into meetings. आपके पास मीटिंग अटेंड करने का टाइम नहीं है तो वो मीटिंग अटेंड कर सकता है आपके लिए. सो दैट इज वेयर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज रीच्ड. एंड इतना भी कोई कॉस्ट नहीं आता है. वी हायर सो मेनी एम्प्लॉयज, वी हैव अ स्टाफ टीम इन आवर ऑफिसेज, बट अगर हम उसकी कॉस्टिंग से कंपेयर करने जाएं तो इतना कॉस्टिंग नहीं आती है अगर हम टेक को अडॉप्ट करते हैं. तो इट इज मच लेसर. ऑब्वियसली आई टच अपॉन दैट इफ टाइम अलाउड. सो moving forward, applications in finance, they automate complex tasks and improves prediction and analyzes big data as well. You can do your predictive analysis as well on the basis of that. Okay. Now, I want to show you this is important because if we don't do it today, then I'm sure we are lagging behind. Also, just assume it like a Kodak, Nokia. टच स्क्रीन के जमाने में टच स्क्रीन में आप नहीं आए तो आप कहीं ना कहीं पीछे रह गए एंड देन साइमल्टेनियसली आउट ही हो गए. तो सिमिलरली एआई के जमाने में आई एम नॉट प्रमोटिंग इट कि आप सिर्फ एआई के बेसिस पे ही करो, आप अपनी एक्सपर्टीज भूल जाओ, यू स्टॉप ट्रेनिंग योरसेल्फ, यू स्टॉप बिकमिंग एक्सपर्ट इन योर फील्ड. नो, ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज जो रूटीन टास्क आपका टाइम खाते हैं जिसकी वजह से यू आर नॉट एबल टू गिव टाइम टू योर सेल्फ फॉर अपस्किलिंग योर सेल्फ, योर फैमिली, आप उसमें उसको अडॉप्ट कर सकते हो. एंड नाउ जस्ट लुक एट द नंबर्स. 78% of organizations use AI in at least one business function. This is McKinsey's 2025 report. Then 85% of financial firms use AI in fraud detection, IT, risk modeling, and marketing. Also, artificial intelligence, it is not just limited to generative AI या online chat GPT, Claude, per se, Gemini. सिर्फ इस तक ही नहीं है. Artificial intelligence includes machine learning also, which has your a lot of Python coding at the back end, and वो completely local भी होती है. ऐसा उसका ऑनलाइन का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है. इट इज सिक्योर ऑल्सो प्रोवाइडेड आपने डेटा सिक्योरिटी सारे प्रोविजंस रखे हैं. ओके. देन कम्स $35 billion spent by financial firms on AI in 2023, projected $97 billion by 2027. Just imagine. Just imagine how much already these financial firms have spent. And the projections are $97 billion. If today we are not active, then when? Is what I want to say. 98% of CFOs now prioritize AI integration for business operations. Obviously, they'll prioritize because then you have also bandwidth to land more clients, to be able to present before more clients. Just like I said, there are two meeting tools, AI tools, Otter.ai and Fireflies.ai. I'll write in the chat box below, which allows you to record your meetings, transcript your meetings. आप अपनी meeting transcript कर सकते हो. If you are having a conversation with your client, तो वो transcriptions के साथ बाद में आपको AI analysis भी देता है कि अगर if you talked about, if you spoke about, for example, any cost sheet, कोई pitch deck, तो वो उसके basis पे आपको suggestions भी देता है. So for example, you forgot completely कि meeting में क्या discuss हुआ था, तो वो transcript चलता रहता है. Anybody, whoever is an established bigger firm, has their own set of softwares in house, and they've made their own meeting softwares as well. They probably would not need such tools for themselves, but different from what they have in the firm. But for those who are just starting or are small size firms or medium size firms, they need it. They can use it. So that will be very advantageous for us as well to use it. Okay, I'll show you Otter.ai. Wait. Otter.ai. AI meeting agent. You can log in from here. And there is another Fireflies.ai. If time allowed, I will also, enter into it and will let you know. So you can schedule your meeting. You can place the link of your meeting in these two meeting AI tools. And then
automatically they'll enter in the meeting. So if in this meeting I want that my meeting should be recorded and transcript should be there of what all the speakers said or all the panelists or the participants, whatever the discussion was made, this author on behalf of me will also enter in the meeting and will keep a transcript of everything. So just imagine as a CFO, it is so useful for you. I will come to CFO services also, but I want to first tell you what AI is capable of doing. Okay, so how now the point is how AI delivers better outcomes. Obviously, first is automation. AI can automate 32 to 39% of work in banking, insurance, and capital markets. This is just an example in other fields as well. Just now, I gave you an example of meetings recorder. It records your meeting, it gives you a transcript of the meeting, and at the end, then you have they have templates also. You can add on that template in your meeting that if you have a meeting related to deciding the cost of a product or a brainstorming on the cost of a product, वो उसका analysis भी आपको देगा. So just imagine आपका टाइम कितना सेव होता है कि वहां पे वो पूरा ट्रांसक्रिप्ट मिनट्स ऑफ द मीटिंग बनकर आवे. यू डोंट नीड टू कीप एनीबडी फिजिकली देयर टू नोट टू हैव द मीटिंग्स. Minutes of the meeting written physically. Okay. Then the next thing is it speeds up reporting and enables 24/7 analysis. Yes. 24/7 analysis. I have one more thing to tell about, which is you can have your own chatbots also. Imagine you are sitting in India, your client is there in Canada, US, UK, Dubai, wherever, Australia, and there is a time zone difference. Now you have a family too. You're working here, you have an Indian office as well, and then you want to enter into the foreign market as well. And the client wants to talk to you post midnight. सो आइदर या तो आप पूरे दिन पूरी रात जगो एंड आपका सर्केडियन रिदम खराब हो, या फिर व्हाट यू कैन डू इज दैट यू कैन हैव योर ओन चैटबॉट. यू कैन क्रिएट योर ओन चैटबॉट विद द हेल्प ऑफ एआई, जहां पे आपकी फर्म से रिलेटेड ऑल द सर्विसेज आर लिस्टेड देयर, या फिर जो भी आपकी फर्म प्रोवाइड करती है उनको आपकी फर्म से रिलेटेड कोई डाउट है, दे वांट टू शेड्यूल अ टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन विथ यू और दे वांट टू शेड्यूल एन इन ऐप मैसेजिंग विथ यू, दे कैन बुक इट वाया देयर. और इफ दे हैव एनी क्वेश्चंस तो आप उस चैटबॉट में फीड करके भी यू कैन पुट इट वेर इन, वहीं से वो पिक करके उस चैटबॉट से मतलब चैटबॉट उस पूरे डेटाबेस से पिक करके उनको आंसर कर सकता है. फॉर एग्जाम्पल दे वांट टू नो इफ यू आर अवेलेबल एट अ पर्टिकुलर टाइमिंग, और they want to know that I am getting stuck. ये particular जो report आपने for example cash flow forecasting analysis की report मेरे पास आई थी जो मैं live dashboard में देख पा रहा हूँ, and एक point है जहां मुझे doubt आ रहा है, they can go and ask the chatbot or at least feed the chatbot that this is the question I want an answer for. एंड आपने अगर चैटबॉट को ऑलरेडी फीड कर रखा होगा दैट दिस इज माय लाइव डैशबोर्ड, और उससे आपने लिंक कर रखा होगा उसको कि अगर कैश फ्लो से रिलेटेड कभी कोई क्वेश्चन वो पूछते हैं अपडेटेड में, तो यू कैन गिव देम दीज रिस्पॉन्सेज, एंड इफ दे आर स्टिल नॉट सेटिस्फाइड विद द रिस्पॉन्सेज यू कैन शेड्यूल एन अपॉइंटमेंट विद मी लेटर ऑन इन वट एवर टाइम जोन. तो एटलीस्ट क्लाइंट को एकदम से ऐसे नहीं लगेगा कि नाउ द पर्सन इज नॉट अवेलेबल. एटलीस्ट एक 24/7 चैटबॉट आपका खुद का अवेलेबल है, यू कैन क्रिएट. सो फॉर एग्जाम्पल हाउ I made a prototype. I am just showing the prototype. This is not a real chatbot, but how you can make your own real-time chatbot like this. So I made my firm's chatbot in which I've given this access to all my existing users, all my existing clients and new clients. That anytime, this is for Indians as well. That anytime you want to access me, anytime you want any services, even you want to talk to me, you have to go and register via this app only. So what happens is कि people they seek free advices from us chartered accountants. फ्री एडवाइसेस ही लेते हैं सब, एक एक घंटा कंसल्टेंसी का कॉल पे दे वेस्ट, एंड देन वी आर नॉट एबल टू ask them for money also, consultation money, and they're like no, but we are just gaining knowledge from you. But we studied so much for this knowledge, and this is our bread and butter. Just because it is a service, it is intangible, doesn't mean that we've not put in effort. This is why we are here. So even if we are giving a suggestion on phone call as well, that no foreign inward remittance का क्या रहेगा, या मान लो कोई एनआरआई कंसल्टेशन आपको देना है तो उसका क्या रहेगा, एंड देन पीपल जस्ट आस्क एंड देन दे शट डाउन, दे पुट द फोन, they don't want to carry forward. So this is you can make a prototype like that on your own with the help of a single prompt you can do. Okay, so for example, just an example, I enter my name only, Priya, and you can you can do it on your own as well.
And you can add much more. So, welcome back, Priya. How can I assist you today? You can ask a question. So, I can ask for book a consultation. And this can be made only via your. So, glad to help. Are you a registered user with Sacrifice? If so, please log in with your email or mobile. Otherwise, I can quickly get you registered. So, you can say, please quickly get me registered and schedule and in app messaging. Sometimes clients are too excited. They want to talk to you. They want to talk at any cost that no, no, we are, we are stuck and we want to know these things. We want to talk. So, nahi, you come with an app. And इसमें भी एक scheduled number होगा जिस unique number से ही आपको call किया जाएगा. So this is how you can manage it. And now if I give it my name, for example, I give my name, whatever number. Hmm. So now can you see that it is since it is not rule based, it is able to identify that your email address does not have a at the rate or a domain. So because it is AI powered, it is able to respond it in this manner as well. So it is a lengthy process. We'll come to it later on. What I'm trying to tell is that we can build it by giving a simple prompt. By giving a simple prompt, when we can create something like this in the front end, and then if we want to get connected with a डेवलपर फॉर दैट मैटर एंड हमने एआई इतना एक्सप्लोर कर लिया कि हम खुद ही उस लेवल तक फुल स्टैक डेवलपमेंट तक भी पहुंच गए हैं फॉर एग्जांपल तो आप ऐसा कुछ बना के अपने पास रख सकते हो एट द मिनिमम कॉस्ट पॉसिबल ओनली द एपीआई कॉस्ट जो इन प्लेटफॉर्म्स की लगती है एंड आप अपना बॉट वहां पे रख सकते हो दे कैन एक्सेस योर बॉट ऑल्सो पेमेंट इज सिक्योर्ड सबसे पहले पेमेंट आएगा कंसल्टेशन का इफ दैट्स हाउ योर एसओपीज वर्क एंड आगे यू कैन मूव फॉरवर्ड देन so it speeds up reporting and enables 24/7 analysis as well. For you, you can also process your reporting in a much speed up manner. How? एक तो अब हम खुद बैठ के एनालिसिस कर रहे हैं ओवर एक्सेल पावर बीआई और एक हमने टूल को दे दिया जो टूल हमको एंड हम उनको बोल रहे हैं कि नहीं हमें इंटरैक्टिव वे में आप इसको एनालिसिस करके बताओ सो फॉर एग्जाम्पल आई गेव क्लॉड CLAUDE which is great for financial reporting analysis that give me a new sorry yeah can you create a real time dashboard from this image so whenever I upload my data my dash also changes and real time dashboard मैंने PwC का internal audit dashboard example उठाया और मैंने उसको बोला कि मुझे एक internal audit dashboard बना के आप दो so ये पूरा ऐसा interactive dashboard बन गया wherein it helps you to select also कि quarterly observations है क्या whether what do you want to enter and फिर वो पूरे what value do you want to enter कि कितने fields low वाले observations कितने हैं high वाले observations कितने हैं and then audit plan status क्या है यहाँ से आप उसको edit कर सकते हो so it is real time ये आपकी presentation के लिए भी बहुत अच्छा है and it also helps you to analyze यहाँ पे मैं financial report डाल के भी उसको analyze कर सकती हूँ right another app which I really personally like is also for example आपको foreign market में किसी को पिच ही करना है एंड पिच करना है या मान लो आपको उनको कोई आपसे प्रपोजल बनवाना है कि मुझे फंडिंग करवानी है आई वांट टू मेक अ प्रपोजल मेड सो यू कैन गेट अ प्रपोजल मेड इन अ वेरी विजुअली अपीलिंग वे थ्रू napkin.ai दिस ऐप इज napkin.ai और आप यहाँ पे napkin.ai पे सो फॉर एग्जाम्पल ये राइटअप है दिस डॉक्यूमेंट प्रोवाइड्स अ कंसाइज ओवरव्यू ऑफ स्पार्कलिंग इनोवेशन इज अ कंपनी which gives which is a soda company and it's a newly established company इनको फंडिंग चाहिए तो इन्होंने अपना पूरे जो इनके प्रोडक्ट्स हैं कैसे इनका वर्क फ्लो रहेगा क्या है वो सारा इसमें इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया एंड दे वांट फंडिंग तो एक तरीका है हम उसको बोरिंग टेक्स्ट के वे में प्रेजेंट करें टू इन्वेस्टर्स और एक तरीका है हम ऐसा कुछ पिच डेक बनाएं सो एज यू कैन सी इसमें क्या होता है नैपकिन में आप ऊपर अपना टेक्स्ट देते हो और टेक्स्ट को जब आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो वो आपको इनेबल करता है कि आप चूज कर सको कि इसमें से आपको कैसी डिजाइन चाहिए सो फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट दिस वाज स्पार्कलिंग इनोवेशंस इन्वेस्टर ओवरव्यू उसका पूरे राइटअप को उसने ऐसे बना दिया देन बिजनेस ओवरव्यू तो बेवरेजेस इनोवेशंस को ऐसे बना दिया थ्रू napkin.ai
I am just giving you a glimpse of these tools that you can use and also manage simultaneously for yourself. So if you want, I can show you. दिस इज नैपकिन डॉट ए आई. यहाँ से आप गूगल पे भी नैपकिन डॉट ए आई आराम से लिख के नैपकिन ए आई लिख दो एक बार एंड कम हियर. The visual AI for business storytelling. This one. You can click on this and you can log in with your Google account. Just make for exploring AI tools, make a different Google account, is what I suggest. So that you can first explore. Okay, you can select an option here for personal use. These are all of these are not free, first of all. So they have minimum credits. So you can try with different email IDs initially, which tool works the best for you, and then later on you can take a tool. Okay, buy a tool if you want to. So for presentation, blogs and newsletters, social media content, data and research report. So I want to use it for data and research report, for example. You can use it for customer communications as well, internal reports, teaching materials, brainstorming ideas, and other things as well. Why I'm showing these things is because when you have access to such tools, your presentation or whatever you want to show to your client, your work, your reports, they become more visually appealing. So whenever we try and engage with clients, they are not so these you have a USP or you're different from others when they are just presenting written text of so many pages and you present something in a visually appealing manner. So in my other account, my credits are expired. So I'm again creating this data and research report I'm selecting here. And I'm again creating that same example here. Okay. So I'll give you a brief of how napkin.ai works. I said that you want to make visually appealing presentations. You can use napkin.ai. So napkin.ai actually helps you to convert your text into visually appealing pictures and images. जहाँ पे आप एक टेक्स्ट में किसी को पढ़ना पड़ता है. इमेजिन आप प्रोजेक्ट फाइनेंस अपन फाइनेंसिंग भी करते हैं तो हम लोग एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते हैं. तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स में भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स जैसे बनती है वैसे ही बनती है, बट देन यू कैन ऑल्सो चूज अ डिफरेंट वे व्हेन यू पिच इट टू योर इन्वेस्टर्स एंड व्हेन यू गो फॉर फंड रेजिंग. एंड दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट entering into the while being in the foreign market or entering into the foreign market when we provide something different. अब बात आती है कि नहीं, they will not be convinced, or what if they don't like it? That is your job to convince them. You have to first be sure with your AI tool or what you produce with the help of AI. पहले आप खुद श्योर हो, फिर ही आप दूसरे को श्योर कर पाओगे. If you yourself are doubtful that no, I'm not liking it, what is this? Then obviously your client will also not be, convinced. But I'm pretty sure कि एक आप टेक्स्ट रिपोर्ट बना के देते हो जो क्लाइंट भी नहीं पढ़ पा रहा, उसको समझ में भी नहीं आ रहा, बिकॉज यूर अ प्रोफेशनल, आपको समझ में आ रहा है. बट और एक आप उसकी जगह पे ऐसा कुछ बना के उनको दे रहे हो which is visually appealing and which is in the form of pictures and images. तो वो भी उसको रीड कर सकता है and even a layman can read it. Obviously, your chances of getting hired as a CFO are more. Okay, we'll circle back to these tools again. It's just that I want to just give you a brief idea. Okay. Just write anything. Ki aapko kahan se, how did you hear about this? Again, I'm saying the pace of how AI is working here might be fast. So for that, please join AI CA Level 1 course or any other course of the institute. This is particularly about how you can how you are a CFO and you can inculcate AI powered services. Okay, so there are two ways. Either you can add paste your text content here, or you can generate text using AI. So I will use generating text using AI, and I have a prompt saved for it, which I got made from Chat GPT only. Okay, and the prompt is this: create a single page investor ready visual for a new soda company that's launching with two inventions, a low sugar natural flavored whatever, and ये पूरा उस कंपनी का ब्रेकडाउन है. ठीक है, एंड इसका मुझे पिच डेक बनाना है. काफी सारी वेबसाइट्स पे आता है ना दैट वी वांट फ्रीलांसर्स फॉर क्रिएटिंग अ बिजनेस प्रपोजल, फॉर क्रिएटिंग अ पिच डेक, फॉर फंड रेजिंग के लिए हमको ऐसे ऐसे वी वांट अ फ्रीलांसर और फ्रैक्शनल CFO सर्विस. दिस इज रियली हेल्पफुल.
if with the help of an AI tool, we can present it in a visually appealing manner. Okay. So I paste it here and enter. So AI is writing, let it write. I'm telling you the speed, the part of where we talked about speed. How is it speeding up analysis or how it's speeding up work? So here, can you see this blue sign or the blue tab, which is saying generate visual, which means ये जो लिखा हुआ है, the text here can be generated into a visual, and I'm clicking on this. And you can see it. So you can choose how you want the visual to look. You want it to look like this, you want it to look like this, or you want it to look like this. You can also ask your client you can also tell कि आपको कैसा चाहिए. एक simple चीज when we enter into AI is first and the foremost, you identify what your problem is in your office. Solve that problem first with the help of AI tools. Start exploring all the AI tools that are available. Not all, DeepSeek or Telegram and all, I don't recommend them safe, but mostly that are famous AI tools that are used by most people. For example, ChatGPT, Claude, your Gemini, Grok. You can use these tools and ask them questions. Start speaking with them, start talking to them, and start writing your problems to these AI tools, and then they will give you answers. First, identify and solve your problem in your office, and then identify your client's problem. We are chartered accountants, we can identify opportunity anywhere. So this is for us that we need to identify हम कहाँ पे AI को यूज करके एक opportunity हमारे client के लिए भी access कर सकते हैं, right? So this is how you can convert it. And फिर उसके बाद में जब ये सारा आप accept कर लेते हो, जैसे मान लो आपने ये वाला accept किया है, then you can export it later on into one PDF or a presentation or a deck. Okay. So this is how your work is also speed up. And main चीज ये है कि आपको ये जो text लिखा है इसके लिए भी you can give a prompt to ChatGPT, like how I gave a prompt to ChatGPT. Okay. Then AI adoption is expected to generate $2 trillion in value for finance globally by 2030, and this is something which is not hidden, something not new, something that we which is unbelievable for us. It is not. Okay. So now, what are CFO services, which is why we have gathered here also. What CFO services, basically, what does a CFO do? What does a CFO stand for, if we talk about? Okay. So basically, CFO is the chief financial officer, the highest ranking financial executive in a company, which is responsible for managing your financial operations, strategy, and reporting. So it serves as the financial backbone of an organization, जो उसकी फाइनेंशियल हेल्थ को, फिजिकल हेल्थ को और स्ट्रेटेजिक ग्रोथ को इंश्योर करता है. ओके. एंड what's the role in a company of a chief financial officer? He's a senior executive who holds primary responsibility for managing a company's financial activities like planning and analysis, budgeting, forecasting, treasury, cash flow oversight, fundraising, investor relations, risk management and compliance. जो अभी अपन ने napkin.ai का भी example that we saw अभी was for fundraising का, कि fundraising के लिए pitch deck बनाना है, तो it is as simple as that. Imagine, even if you're working in a company also currently and you're not a member in practice, if you have these tools with you and usko aap thoda smartly use karte ho, तो you will have a leverage over other people who are not using these tools. Okay. And what are the core responsibilities and functions of a strategic financial, of a chief financial officer? Is that strategic financial management, again, financial planning, analysis, and all these that we talked about. Now, how is a CFO basically hired? There are so many types of CFOs. Companies who have the budget and the companies who are larger organizations who are also by law required to have a full-time CFO, they hire a full-time CFO, and which is a permanent employee. It's a full-time executive. Okay. It is best for large companies which with complex financial needs requiring constant oversight. कि constantly उनको देखना पड़ेगा.
and obviously long term employment engagement it requires, and comprehensive benefits and equity. Again, then there is concept of fractional CFO. Companies which cannot hire or they don't require, also sometimes the companies don't require a full-time CFO as per the size of the company and also the budget, also they can hire fractional part-time CFO services also, like how I explained what a chief financial officer does, and then there is per month rate or whatever hourly rate, however you charge. Okay, then comes virtual CFO, which is the best for us who are sitting here in India to provide services outside of India, you know, because we won't be employed in that company. We won't be fully also employed. And then we are providing remote CFO services, exactly same services. For those who are smaller size organizations or even one person organization or smaller startups for that matter, who are looking for cheaper services. Cheaper services means cost wise cheaper services, not those cheap services. Okay. So small businesses and startups, they are very comfortable with remote financial management. So they hire virtual CFO. So this also you can go and dig in your ChatGPT or any other AI tool, that what all companies or what all countries सबसे ज़्यादा it is in trend, for example. Okay. Then there is interim CFO for short term engagements. होता वो full time executive है, but then interim for short term engagements. Then we have CFO consulting and advisory also, freelance basis पे, hourly basis पे. Okay. So my point is कि कुल मिला के सर्विस वो यही देंगे. Financial planning and analysis, budgeting and forecasting, treasury and cash flow oversight, और ये सारी जो मैंने इसमें mention कर रखी है. Also, CFOs are a bridge between operations and strategy. तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि व्हाट वी हैव बीन डूइंग हियर एज चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, हम बहुत अलग स्केल पे आगे एंटर हो सकते हैं नए मार्केट में, और अगर वहां पे हम हैं तो वी कैन टैप इनटू दीज सर्विसेज एज वेल. I don't know what like what I know, for example in Canada also mostly वहां पे आज भी बहुत सारी जगहों पे वहां पे मैनुअल ही काम होता है. मैनुअली बाय मैनुअल आई डोंट मीन पेपर पेन, बट मैनुअली लाइक कंप्यूटर पे आप बहुत मैनुअली काम कर रहे हो. वी आर ऑल्सो हियर इन इंडिया एट मोस्ट प्लेसेस डूइंग दैट. बट अगर हम छोटे लेवल पे ऑटोमेशन लेकर आ जाते हैं, हम सीएफओ सर्विसेज ये तो प्रोवाइड कर रहे हैं, बट देन हम उनको ऑटोमेशन सर्विसेज भी साथ में प्रोवाइड कर रहे हैं, इट विल बी अ गेम चेंजर फॉर देम at prices comfortable to us. Obviously, we won't be charging at that price जो वहां पे है, जितनी जितनी prices वहां पे है, right? So these are CFO services, and I hope I can take questions later on if somebody has any query regarding that. Okay, yeah. So how is traditional CFO services different from AI powered CFO services? ट्रेडिशनल सर्विसेज मैनुअल डेटा कलेक्शन ही होता है, या स्प्रेडशीट्स आती है वहां से, या फिर हम लोग यहाँ अकाउंटिंग बुक कीपिंग सॉफ्टवेयर हो गया वहां से डाउनलोड होते हैं रिपोर्ट्स, एंड देन पूरा आप उसका एनालाइज होता है. रिमेंबर आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मैन्युअली मेकिंग प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बैलेंस. नो, दैट से सडनली Recording in फोर साइड पे आ progress. जाते हो. हम मेजरली चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हाइंडसाइट में काम करते हैं, कंप्लायंसेस का काम कर रहे हैं, जो चीजें हो चुकी हैं हम उनको मैनेज कर रहे हैं, राइट? हम फोर साइट पे फोकस कर सकते हैं. सीएफओ सर्विसेज फोर साइट की है, पर हम उसको भी ऑटोमेट कर सकते हैं. ऑटोमेटेड डेटा पाइपलाइंस एंड डैशबोर्ड्स, जैसे अभी दिखाया कि आप अपना पूरा डैश भी बना सकते हो, आप अपने एनालिसिस को भी स्पीड अप भी कर सकते हो, एंड को विजुअली अपीलिंग भी बना सकते हो, एंड यू कैन ऑटोमेट ऑल्सो. यहाँ पे आप ट्रिगर भी लगा सकते हो कि whenever I put a pitch deck in my Gmail, या इस pitch deck नाम की कोई भी Gmail पे if a file comes up, automatically थ्रू उसको ऑब्वियसली आपको एक्सेस देना पड़ेगा, टूल फॉर्म बना दो. अब ये भी कर सकते हो,
प्रॉब्लम मेरी क्या है, मेरी अपॉर्चुनिटी क्या है और मैं कैसे सर्विस यहाँ पे दे सकता हूँ। हो सकता है जैसे आई हैड अ क्लाइंट इन कनाडा हु आस्क्ड मी कि मुझे ना ये जो मैनुअल हमारे फोटो से या फिर हमारे जो इनवॉइसेस मैन्युअली हमें फीड करने पड़ते हैं ना, मुझे मैन्युअली फीड नहीं करने। आई वांट कि ड्राइव से ऑटोमेटिकली मेरे सॉफ्टवेयर में चले जाए। देयर आर टूल्स ऑनलाइन एंड ऑनलाइन यू कैन आल्सो इट्स सच अ स्मॉल टूल फॉर योर क्लाइंट एंड यू कैन गिव इट टू देम। They'll happily take it from you अगर आप पैकेज सर्विस उनको देते हो तो। Okay. Then comes predictive analytics and scenario modeling. Obviously, predictive analytics, for example, in this dashboard, interactive dashboard. Wait, where did it go? Hmm. Yeah, यहाँ पे predictive analysis भी हो जाता है. Not this is just a dashboard that is made, but if you wanted to make a predictive analysis on the basis of this dashboard, give me suggestions also, it'll give you suggestions also. So for example, here are the action items and alerts. One, high risk observation past due, audit committee action needed, high risk time allocation trending. So this gives you suggestion as well. Now, if you want an example of how it can do predictions, also you can post a audited financial, a public report of any company, of any public company, a financial audited financial statements of any public company, and you can upload it here, and you can ask them कि मुझे इसको एक beautiful dashboard में you present it. Claude को वो prompt देकर that give it to me in a beautiful dashboard style and just make a predictive analysis कि आगे 3-4 साल में बेस्ड ऑन व्हाट आई हैव गिवन यू अभी करंट का आगे 3-4 साल में इसका क्या स्टेटस रहने वाला है और इसको किन चीजों पे फोकस करना चाहिए दैट इज ऑल्सो कैन बी डन just remember that whenever you put something like this on any platform, be it ChatGPT, be it Claude, be it any AI tool, just remember, redact, mask your documents first. Client ka sensitive data, do not just put it there. Although ChatGPT says that it is GDPR compliant, it is ASIC compliant, जो EU के और यहाँ के ऑस्ट्रेलिया के यहाँ के जो रूल्स हैं या यूएस के जो जो रूल्स हैं, it says that it is compliant. But हमें यहाँ पे रह के जो कि हम पे भी जो डीपीडीपी एक्ट लगता है, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट लगता है, हमें उसको भी कंप्लाई करना है, प्रोफेशनल एथिक्स मेंटेन करके रखना है. वी डोंट हैव टू थिंक कि भाई वो वहां पे हैं हम यहाँ पे हैं तो क्या फर्क पड़ रहा है, उनका डेटा तो डायरेक्टली एआई टूल में डाल दो बिकॉज वी हैव शॉर्टेज ऑफ टाइम एंड जस्ट रन थ्रू एन ऑनलाइन एआई टूल और वो अपन को पूरा एनालिसिस करके दे देगा. नो, हाइड सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन लाइक नेम और उस जो भी कंपनी आइडेंटिफिकेशन नंबर है वो सब हाइड करके एंड देन पुट इट एनीवेयर. Okay, do not put any sensitive any insider information also for that matter. वो तो outright legally गलत है. Okay, so although ये लोग कहते हैं कि हम लोग GDPR compliant है, हम लोग CPR HIPAA compliant है, GLBA compliant है, but all I'm trying to say, ChatGPT and other tools, all I'm trying to say is that you be compliant on your side first. You हम अपने हाथ पैर बचा के पहले चलो, then later on हम उनका देखेंगे. Okay. Also, have our real-time fraud detection and smart auditing. Smart auditing, I just show you the dashboard. जहां पे अगर वो डैशबोर्ड आपके पास है, उसका कोड आप उससे ले सकते हो. देखो, द ब्यूटी क्या है. अगर आप थोड़ा बहुत भी पाइथन पीछे बैक स्क्रिप्ट पे थोड़ा काम करते हो और नहीं भी आता है तो चैट जीपीटी से पूछ पूछ के काम कर लेते हो, तो यहाँ से आप इसका कोड कॉपी कर सकते हो. डाउनलोड एज टीएसएक्स का रखा है या ये है कोड, और ये कोड यहाँ से बनवा के आप इसको ऑफलाइन भी रन कर सकते हो. अब ऑफलाइन मैं कैसे रन करूं, मुझे कैसे आता है, वो थोड़ा आपको टेक में एंटर करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करना पड़ेगा. कोडिंग सीखनी नहीं है, बस यू शुड नो वेयर व्हाट टू पुट वेयर, दैट्स इट. थोड़ा बहुत टेक के साथ फ्रेंडली होना पड़ेगा. इफ वी थिंक कि हम कंप्लीटली ब्लाइंड हो जाते हैं कि नहीं ये तो इंजीनियर का ही काम है, तो फिर इंजीनियर सारा काम ही लेके चला जाएगा. वैसे भी जियो पे 24 रुपए में रिटर्न फाइल हो रही है. ओके, फाइन. नाउ या सो द पाथ टू बिकमिंग एन एआई पावर्ड सीएफओ, जो मैं शुरुआत से ही बोल रही हूँ, विच इज फर्स्ट बिल्ड एआई लिटरेसी. दैट इज द अट मोस्ट इंपॉर्टेंट. अंडरस्टैंड बेसिक्स कि कब आया, क्या कैपेबिलिटी है. जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पार्ट है, पहले मशीन लर्निंग आया, फिर डीप लर्निंग आया, उसके बाद गूगल ने ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर निकाला जिसको, ठीक है, देन देयर आर कंप्यूटर विजन टेक्निक्स. तो पहले पूरा एआई को अच्छे से एक्सप्लोर करो
एंड बाय एक्सप्लोरिंग दैट डजंट मीन कि जो टूल मार्केट में है बस हर टूल के बारे में नॉलेज ले लो, हर टूल खरीद के रख लो, नो। जस्ट ट्राई एंड गेज नॉलेज कि ये टूल कर क्या रहा है, व्हाट इट इज केपेबल ऑफ डूइंग। जैसे ऑटर एआई है तो वो मीटिंग मैनेजमेंट टूल है, फायरफ्लाइज मीटिंग मैनेजमेंट है। सम माइट बी कंफर्टेबल विद ऑटर एआई, सम माइट बी कंफर्टेबल विद कैलेंडली फॉर दैट मैटर, जहाँ पे शेड्यूल होते हैं आपकी सारी मीटिंग्स। सम माइट बी कंफर्टेबल विद जीमेल ओनली, कि मैं तो जीमेल पे ही शेड्यूल कर लेता हूँ एंड ऑटोमेट कर लेता हूँ वाया गूगल ऐप स्क्रिप्ट। लोग उधर भी कंफर्टेबल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे बल्क में मैसेजेस मेल सेंड करने हैं, तो मैं गूगल ऐप स्क्रिप्ट लिख के एंड आई कैन डू अ मेल मर्ज। वहां पे बस कुछ नहीं करना है, वहां पे सब लोगों के मेल आईडी प्रोवाइड करने हैं, जो भी आपको काम करवाना है। एंड जिनको भी बल्क में मेल भेजना है, वहां पे मैसेज, एक कॉलम में मेल आईडी, दूसरे कॉलम में मैसेज, तीसरे कॉलम में आपका क्या कहते हैं, वेदर इट इज टू बी सेंट और नॉट। वो ऑब्वियसली आपको डिसाइड करना है क्या क्या आपको भेजना है, व्हाट कॉलम्स यू हैव टू डिसाइड। पॉइंट हियर इज कि वो आप ऑटोमेट कर सकते हो। तो कौन कौन किस चीज में कंफर्टेबल है, यू हैव टू आइडेंटिफाई ऑन योर ओन। कि somebody says no, I'm not comfortable with any of these things, I want to work in my traditional manner only, okay, 6 months later you might realize, okay, then start with automation. That's what I just mentioned, कि एआई का थोड़ा बहुत पता चल गया कि अच्छा यहाँ की कैपेबिलिटी ये है कि ये आपको आउटपुट जनरेट करके दे देता है, आपके लिए प्रिडिक्टिव एनालिसिस कर देता है, आपके लिए रियल टाइम अनॉमली डिटेक्ट कर सकता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बैंक स्टेटमेंट को हाइड करके उसके जो रीडैक्ट करके, आई शो यू रीडैक्टेड डॉक्यूमेंट की रीडैक्ट क्या होता है, वेट, कि रीडैक्ट करके अगर मैं अपलोड करना चाहूँ, वेट, सो फॉर एग्जाम्पल दिस इज show cause notice. This is an example that I'm giving you. Okay, this is a show cause notice. It's a plain show cause notice. इसको मैंने ऊपर डाल दिया तो यहाँ पे तो सारे GSTN एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर सब कुछ आ रहा है। ओके, आई कांट पुट इट लाइक दैट। व्हाट आई नीड टू डू इज आई वांट टू रीडैक्ट। अच्छा, ये रीडैक्ट कोड मैंने ऑफलाइन बनाया है कंप्लीटली एक पाइथन स्क्रिप्ट से। आई एम नॉट अ कोडर, आई एम नॉट अ टेकी एट ऑल, आई डोंट अंडरस्टैंड। और 4 साल इंजीनियरिंग करके वो इंजीनियर भी कर सकते हैं। पर एआई का यूज मैंने लेके पाइथन कोड लिखवाया है, पाइथन कोड को उसी से एआई टूल से पूछा कि भैया तुम ही बताओ कैसे इसको रन करूं, और फिर उसको रन करके मैंने एक रीडैक्ट टूल बना लिया एंड उससे मैंने शो कॉज नोटिस को रीडैक्ट कर दिया। सी, सिंस इट्स रूल बेस्ड, तो मेरे रूल में जो जो भी चीजें फॉलो कर रही थी ना सबको रिडैक्ट कर दिया है यहाँ पे। प्लेस ऑफ बिजनेस यहाँ लिखा रहा था, उसमें प्लेस ऑफ बिजनेस, बिकॉज फॉर मी दैट वाज आल्सो सेंसिटिव। तो अभी इसको तो अब बोलोगे इसको क्या अपलोड करे, तो ऑब्वियसली यू हैव टू आइडेंटिफाई कि आपको क्या रिडैक्ट करवाना है, राइट। सो इसे रिडैक्शन कहते हैं। सो अगेन, कोई भी अगर हम डॉक्यूमेंट हम उधर अपलोड कर रहे हैं फॉर आइदर अनॉमली डिटेक्शन, या फिर मान लो बैंक स्टेटमेंट, जैसे मैं एग्जांपल दे रही थी कि मुझे बैंक स्टेटमेंट अपलोड करना है टू आइडेंटिफाई कि क्या हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस हुई हैं, या मान लो मुझे बैंक रिकंसिलिएशन करना है विद ऑल माय इनवॉइसेस आर जनरेटेड, तो मैंने एक इनवॉइसेस का एक्सपोर्ट कर लिया जीरो से एक्सेल के अंदर, एंड आई हैव आल्सो एक्सपोर्टेड माय बैंक स्टेटमेंट, क्योंकि बैंक स्टेटमेंट तो वहां पे ऑलरेडी उसका लिंक रहता है, तो वो ऑटोमेटिक एंट्री आती रहती है। तो वो मैंने एक्सपोर्ट कर लिया। मुझे एनालाइज करना है कि मेरा बेसिकली कैश फ्लो कैसा चल रहा है। तो उसमें इस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, या तो आप वीबीए स्क्रिप्ट पहले एक्सेल में डाल दो और उसको सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को वहां से हटा देगा, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन हाइड करके उसको डायरेक्टली आप अपलोड कर दो, लिंक कर दो, या फिर आप उसको खुद रिडैक्ट करके एंड देन अपलोड टू योर टूल एंड उसको पूछ लो भाई एनालिसिस, मुझे प्रिडिक्टिव एनालिसिस करके दे दो, रादर देन योर सेल्फ डिगिंग इट इनटू इट। क्योंकि आप एक लिमिट तक आप जब सोचोगे वो आपको बहुत सारे ऑप्शंस देगा, तो आपका दिमाग ज्यादा चलेगा। ह्यूमन इंटेलिजेंस को तो आप क्रॉस नहीं कर सकते ना। तो you'll be able to think in a better way. Okay, again, start with automation and analyze with AI. Just what I explained. That implement predictive forecasting, risk modeling, data visualization. अभी आपके पास हो सकता है किसी के पास क्लाइंट हो, किसी के पास नहीं हो। तो जिनके पास है, वेल एंड गुड, आप छोटे छोटे प्रोटोटाइप्स के साथ स्टार्ट कर सकते हो, एग्जाम्पल के साथ स्टार्ट कर सकते हो। द क्लाइंट्स लोग जिनके पास क्लाइंट्स नहीं है अभी, वो प्रोटोटाइप बना सकते हैं उन क्लाइंट्स को शो करने के लिए। आप डमी प्रोटोटाइप्स बना सकते हो इस तरह के। सॉरी। ओके,
एंड डमी प्रोटोटाइप में फर्स्टली यू डोंट हैव टू बी स्कैर्ड कि मुझे नहीं समझ आ रहा, मुझे आ ही नहीं रहा है कि मैं इसे यूज कैसे करूं. इट विल नॉट हार्म यू फ्रॉम देयर. उसी से एग्जाम्पल सेट करवाओ दैट यू ओनली गिव मी एन एग्जाम्पल, you only tell me a sample data, you only create a dashboard for me using that sample data, or you only predict for me using that sample data. मुझे एक विजुअल आप एक डैश बना के दो जिससे मैं फिर उसको एनालाइज कर सकूं. एंड फिर उस प्रोटोटाइप को आप अपने क्लाइंट को दिखा सकते हो कि सी दिस इज हाउ एआई पावर्ड वी प्रोवाइड सर्विसेज. फॉर एग्जांपल जस्ट लाइक हाउ आई शोड माय एआई बॉट टू यू, जो कि आप अपने क्लाइंट को भी बोल सकते हो कि हम आपको इस तरह का बॉट की सर्विस भी प्रोवाइड कर सकते हैं विच विल बी 24/7 अवेलेबल फॉर यू. ये आप नॉर्मल इंडिया में भी कर सकते हो. इसके लिए जरूरी नहीं है कि मतलब दिस इज it has no bias. AI has no bias towards any boundaries and borders. Okay, so we'll come back to our chatbot. So I will copy it again and थोड़ा सा टाइम हम इसको एक बार देते हैं जिससे कि हमको what I wanted to share at that time वो एक बार आ जाए. gmail.com. And yeah, I provide my consent. For example, someone new has come and they want to inquire about the services. Services की inquiry तो ये बता देगा, but they want to book a consultation. तो पहले से आप उसको वो बोलेगा कि फर्स्ट पे एंड देन योर कंसल्टेशन विल बी बुक. क्योंकि डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो वो भी तो पैसा रखवाते हैं ना. हम थोड़ी ना जाके पहले डॉक्टर को टेस्ट करते हैं कि नहीं डॉक्टर सही है कि नहीं है. पहले तो पीसी पे करते हैं ना हम. हमें कब पता चलता है? वो तो हमें जाने के बाद पता चलता है कि नहीं डॉक्टर सही नहीं था. तो जो हमारा टाइम है, हम हमारे टाइम को तो हम वैल्यू करें. हम तो हमारे अपने आप को पैकेज करके वहां पे मार्केट करें एटलीस्ट व्हेनेवर समबडी अप्रोचेस अस. ओके, ओके, सो मार्केट वर्ड इज नॉट द राइट वर्ड फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स. या एंड yeah, so this is I provide my consent. Also give me a list of service offerings. You can create a chatbot like this. You can make your chatbot like this. और ये डमी प्रोटोटाइप दिखा सकते हो अपने क्लाइंट को कि आप अगर बहुत छोटे स्मॉल स्केल क्लाइंट हो तो यू कैन ऑल्सो आई कैन मेक दिस फॉर यू एज वेल. एंड यू कैन ऑल्सो टॉक टू अस वाया दिस कि हम ये सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं इसी पैकेज में. तो पहले आप उसकी प्रैक्टिस अपने ग्राउंड पे करो. आप वो स्किल अपने पास ऑब्टेन करो. दिस विल बी अ लिटिल स्लो. गूगल एआई स्टूडियो से जो एप्स बनती है थोड़ा सा स्लो स्लो रिस्पॉन्ड करती है. उसको रिस्पॉन्स आने दो, देन वील कम बैक टू अवर पीपीटी. ओके, आई होप माय पेस इज नॉट फास्ट इनफ. And if it is, we can touch upon the questions later on. We can cover back in the questions. Okay, so yeah, uh, how can we upskill? We can take courses. इंस्टीट्यूट का कोर्स कर सकते हो. आपको अगर कंफर्टेबल यूट्यूब वीडियो से है, यूट्यूब वीडियो से कर लो. प्रोवाइडेड जस्ट रिमेंबर डेटा सिक्योरिटी, डेटा प्राइवेसी, इन सब चीजों का ध्यान रखते हुए हु बेटर देन अस कैन अंडरस्टैंड दिस. ओके, अटेंड वर्कशॉप्स, लीड स्मॉल एआई पायलट प्रोजेक्ट्स. जो अभी मैं दिखा रही हूँ वो सब पायलट प्रोजेक्ट्स हैं, वो सब डमी प्रोजेक्ट्स हैं. उन चीजों को थोड़ा स्टार्ट करना शुरू करो. बिकॉज व्हेन यू स्टार्ट touching upon those subjects or you start touching upon those projects, तब चीजें थोड़ी बेटर होती हैं. तब हमको भी कॉन्फिडेंस आता है. एक बार डमी प्रोटोटाइप बनाते हैं तो ऑटोमेटिकली रियल टाइम केस है. एंड आई एम प्रिटी श्योर दैट all of the viewers listening to this webinar, watching this webinar, would be having one or two problems or more than one or two problems of their clients and of their own as well. तो स्टार्ट बाय टॉकिंग टू योर एआई टूल. कोई भी एक जो बढ़िया लग रहा है उसको पकड़ के उससे बात करके start by prompting. Also, I want to tell you, prompt is the key here. The person who has the best ability to give a better prompt, जिसका prompt best crafted होता है, prompt engineering जिसको कहते हैं, सबसे best crafted prompt होता है, आपके the chances of getting better answers are more. अगर आपका prompt one liner है, okay, tell me what services are CFO services are most provided in Australian market, or what sort of services are mostly taken by Australian people from India. It is not going to answer. It will start hallucinating. सारे तरह के आंसर देगा एंड आपको एक सेकंड में बिलीव करा देगा
कि मैं तो हर चीज का धुरंधर बन सकता हूँ. दिस इज नॉट हाउ इट हैपेंस. और फॉर एग्जाम्पल यू आस्क देम कि मुझे कैश फ्लो प्रिडिक्शंस करके देना, एंड यू जस्ट राइट प्रिडिक्ट कैश फ्लोज फॉर मी, यूज अ डमी एग्जाम्पल. तो फिर वो तो पता नहीं कौन सा एग्जाम्पल लेके, और कभी कोई कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल, कभी कोई हेलुसिनेटेड एग्जाम्पल वो वहां से यूज कर सकता है. इमेजिन बैंगलोर का एक केस था जहां पे आई थिंक बैंगलोर हाई कोर्ट में ही दे गेव द सिंस इट इज जनरेटिव एआई, उसने अपने मन से केस लॉ जनरेट कर दिया. बिकॉज उसको नहीं पता, उसको इतना ये नहीं पता, वो हेलुसिनेट करने लग गया. उसकी लिमिटेशन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू इंटेलिजेंट टूल की, कि उसको यही नहीं पता कि भैया मुझे केस लॉ में जनरेट नहीं कर सकता. केस लॉ होता है, वो हो गया जो केस चल रहा है, आपको वही बताना होता है, आपको अपने मन से केस लॉ जनरेट करके नहीं देना होता. सो वो भी एक चीज होती है. तो जस्ट रिमेंबर द लिमिटेशंस एज वेल. कीप योर प्रॉम्प्ट एक्सट्रीमली क्रिस्प. ओके. एंड देन start making a little projects and start working around your AI tools. एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा आएगा which will be कि कौन सा बाय करें, कौन सा बेस्ट है. अगेन खुद एक्सप्लोर करो, खुद आइडेंटिफाई करो कि जिस रीजन में मैं काम कर रहा हूँ या करना चाहता हूँ, उस रीजन के लिए मुझे ये वाला टूल बेस्ट लग रहा है या मेरे को सही आंसर्स दे रहा है, बिकॉज इट इज बिन ट्रेन. उसकी मेमोरी ट्रेन होती गई जब जब भी मैंने उसको क्वेश्चन पूछा. फॉर एग्जाम्पल चैट जीपीटी फॉर दैट मैटर, वो अपन को बहुत हेल्प करता है मेमोरी को, क्या कहते हैं, वो मेमोराइज बहुत अच्छा करके रखता है, राइट. सो लेट्स कम बैक टू आवर बॉट. ओके. So here is your payment link for the in-app messaging. Just forget the amount. Yeah, one business day in-app messaging, one business day. एक business day पे आप कितने भी in-app messaging कर सकते हो, but you have to provide it. You'll have to choose a slot. Okay. And this is the payment link. जब तक ये पेमेंट लिंक पे पेमेंट नहीं करेगा क्लाइंट, इट विल नॉट मूव फॉरवर्ड. तो अब इसके अंदर मुझे पेमेंट गेटवे भी ऐड करना है, मुझे इसके अंदर एपीआई इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट्सएप करना है, मुझे इसका पूरा बैकएंड डेवलप करना है. तो वो एक नेक्स्ट पार्ट है. जितना मैं यहां तक पहुंच जाऊंगी तो मैं उसके आगे भी चली जाऊंगी, प्रोवाइडेड हम हाउ मच आर वी एक्साइटेड टू प्रोवाइड दी सर्विसेज टू आवर क्लाइंट. एक क्वेश्चन भी आएगा कि जब इंजीनियर्स हैं तो व्हाई डू वी डू दिस. सी, our client needs a particular has a particular problem. We are there to provide solutions to those particular problems. Imagine अगर हम टेक enabled भी हैं तो हमें एक पैकेज सर्विस मिल जाएगी. बुक कीपिंग, अकाउंटिंग, रिटर्न फाइलिंग, सेल्फ असेसमेंट ना करते ही हैं हम रिटर्न फाइलिंग. या फिर हम क्या चाहते हैं कि आप एंड टू एंड सर्विस हमको ही दे दो सारी. आप यू जस्ट डू वन थिंग कि आप हमसे बुक कीपिंग भी करवा लो, आप पूरी अकाउंटिंग वगैरह करवा के फिर एनालिसिस भी हम ही आपको करके दे देंगे एंड के अंदर तक. एंड पूरी एंड टू एंड सर्विसेज. एंड प्रोबेबली ऑब्वियसली अगर वहां पे रिटर्न फाइलिंग के लिए अगर लाइसेंसिंग की रिक्वायरमेंट तो लाइसेंसिंग, अदरवाइज हम एंड टू एंड आपको सारा काम करके देंगे. सो उसमें अगर आपके पास टेक की भी नॉलेज है, मैं तो कहती हूँ इन डेप्थ नॉलेज नहीं है, इफ यू हैव टेक का नॉलेज अ लिटिल बिट ऑल्सो, एटलीस्ट यू कैन पिच योर क्लाइंट वेल. You don't need to be coders, you don't need to be extremely tech enabled, but इतनी टर्मिनोलॉजीज तो आनी चाहिए कि क्लाइंट को भी कंफर्टेबल लगे कि हाँ ओके, समझ में आ रहा है इसको. एंड ऑल्सो अगर आप कभी किसी इंजीनियर के साथ टाइप भी करना चाहते हो, ऑनबोर्ड भी करना चाहते हो, तो आप भी एआई की हेल्प से समझ सकते हो कि वो क्या कर रहा है, सो दैट यू आर ऑल्सो नॉट बिल्ड मोर. ओके. सो जस्ट लाइक दिस. फिर ये उसको अगर यहाँ पे पेमेंट लिंक, दिस इज अ प्रोटोटाइप. तो अगर आप चाहो तो इस पे पेमेंट लिंक, जैसे पेमेंट लिंक उसके वो उस पे पेमेंट कर देगा, वो आपके पेमेंट गेटवे से कनेक्टेड रहेगा, आपके पास पेमेंट आ जाएगा, उसके पास कंफर्मेशन लिंक चला जाएगा, एंड आपके पास ऑप्शन आ जाएगा कि आप जो पार्टनर है, की पर्सन है कंपनी के, जिसके साथ वो मैसेज पे बात करना चाहता है, कंसल्टेशन लेना चाहता है, आप अपना स्लॉट प्रोवाइड कर दोगे दैट दिस इज माई अवेलेबल स्लॉट. दैट्स हाउ देयर विल बी अ लिटिल बैरियर ऑल्सो. ओके. एक जो पेमेंट का प्रॉब्लम है ना, वो थोड़ा सॉल्व हो सकता है. ऑल्सो if we start adopting things more professionally and in a corporate manner at a very short at a very small stage only, the chances of scaling higher will also be more. क्योंकि उनको भी लगता है कि हाँ स्ट्रक्चर्ड वे में चीजें हो रही हैं, लाइक कॉर्पोरेट्स हर चीज बिल होती है वहां पे, फ्री में कुछ भी नहीं होता, आवर्स पे बिलेबल्स होता है. सो दैट इज हाउ इट वर्क्स. ओके. एंड यू विल बी अमेज्ड टू नो कि ये गूगल एआई स्टूडियो के मात्र एक प्रॉम्प्ट से ये ऐप बिल्ड हुई है. So Google AI Studio, I'll just write it here so that you all can also try if you're in your on your system setting. Google AI Studio. कुछ भी नहीं आता. You don't need to remember the
URL of it. You can just write Google AI Studio on Gmail, sorry, Google simply, and आप यहाँ पे उस पे click कर सकते हो. This is Google. Basically, this is a computer vision app. जो आजकल वो 3D apps जो सबसे ज्यादा LinkedIn पे float कर रही हैं. If you can see, या फिर अभी बीच में people could shake hand with मोदी जी, या फिर कोई शाहरुख खान के साथ फोटो पोस्ट कर रहा था. That was possible via Nano Banana. ये गूगल एआई स्टूडियो है. ये एक कंप्यूटर विजन ऐप है. ओके. इसी के अंदर एक यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे देयर इज एन ऑप्शन विच गिव्स यू, सो ये एक पेड सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है, विच इज वाई इट इज गिविंग सो मेनी सर्विसेज. यू माइट नॉट हैव अ पेड वर्जन, पर ये एक महीने का फ्री ट्रायल भी आपको देता है बाय प्रोवाइडिंग अ क्रेडिट कार्ड. तो अगर आप चाहो तो फ्री ट्रायल एक्सेस कर सकते हो क्रेडिट कार्ड उस पे लगा के, यहाँ बिलिंग पे, यूसेज एंड बिलिंग पे, और एपीआई की जनरेट कर सकते हो. ओके, ये गलत वाला अकाउंट है. वेट. तो वो भी आप कर सकते हो अगर आपको ट्राई करना है. जस्ट रिमेंबर कि वो क्रेडिट कार्ड टाइमली रिमूव कर देना 1 महीने से पहले. ओके. सो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होता है स्टूडियो में बिल्ड करने का. सो ये इमेजेस को स्कैन करता है, आपके टेक्स्ट को भी के रिस्पॉन्सेज देता है अगर आप चाहो तो कुछ. बट सबसे मेजरली इट इज फॉर योर क्या कंप्यूटर विजन ऐप, कि स्कैन करके इमेजेस को या वट एवर यू वॉन्ट टू बिल्ड, ये वो बिल्ड भी करता है. सो दिस इज अ बिल्ड ऐप, बिल्ड प्रोसेस विथ जेमिनाई. लेफ्ट हैंड साइड गूगल एआई स्टूडियो. I am explaining the most layman language so that assuming that everybody here doesn't know what this is. Okay, and you can start building your app here. You can write a basic, say, basic prompt. So, for example, I can write a prompt, create an app for tracking attendance of my staff. दिस इज जस्ट वन लाइन प्रॉम्प्ट दैट आई गिवन. वो एआई है तो वो आगे से ले सकता है. अब क्योंकि मैंने सिर्फ वन लाइन प्रॉम्प्ट अभी है कि जैसे फॉर एग्जांपल इसको दिया है, तो द चांसेस आर दैट इट माइट hallucinate and create anything and everything that it wants. Okay, so a prompt has to be very lengthy also. So let's do one thing. इसको एक बार चैट जीपीटी को बोलते हैं, बोलते हैं कि यू जस्ट क्रिएट अ गुड प्रॉम्प्ट फॉर मी. चैट जीपीटी अपने आप अपने लेवल में बड़ा हेलुसिनेट करके लंबा सा आपको एक प्रॉम्प्ट देगा. Create, sorry, a prompt for creating an app for tracking attendance of my staff in Google AI Studio. This is an example कि आप अपनी ऐप ऐसे बना सकते हो, ऐसा प्रोटोटाइप क्रिएट करके, एंड देन यू कैन शो इट टू योर क्लाइंट देयर कि वी कैन डू समथिंग लाइक दिस आल्सो. बट जैसा मैंने कहा, वो पहले प्रोसेसेस फॉलो कर लेना कि एआई लिटरेसी, छोटे ऑटोमेशन, स्टार्ट वर्किंग एट योर लेवल, एंड देन अपस्किल. ओके, इस पूरे प्रोसेस में मीनवाइल यू कैन स्टार्ट पिचिंग आल्सो. डोंट जस्ट जंप विद कि यहाँ से प्रोटोटाइप बना के अपने क्लाइंट को बता दिया कि देखो हम ये प्रोवाइड कर देंगे, एंड देन लेटर ऑन यू आर स्ट्रगलिंग विद इट. ओके, so let it create a prompt. I will show you one app that I made with the help of, again, prototype only, with the help of the AI Studio only. This is for a fresh market, like a DMart sort of. So a fruit market, vegetables and fruits market ka dashboard that I made. It has a client view and it has a company view. And company view, मैंने उसको command ही ऐसा दिया that company view में you must be giving, you should give an option to upload invoices. So wait, I will upload, sorry, Mart invoices, and I will upload bank statement. वो prompt अभी बन रहा है, so we shall not wait on that, which is why we've come to this example I'm showing कि ये इस तरह का prototype भी आप दिखा के and pitch कर सकते हो clients को. Or you can actually make it also for your clients using such tools. So this is just the front end. इसका पूरा back end होगा, database होगा, आपके payment gateways होंगे, या API integrations होंगे wherever needed. Not in this payment, but yeah, wherever needed. तो वो भी एक चीज रहेगी. That is another step. वो आगे अगला step है. But I'm telling you कि possibilities क्या है. Okay, it is analyzing.
सो मैंने इनवॉइस अपलोड कर दिया, मैंने बैंक स्टेटमेंट अपलोड कर दिया, एंड आई जस्ट वांट, जो कि CSV फाइल में कन्वर्टेड है, एंड आई जस्ट वांट देम कि इसका एनालिसिस करके मेरे को दे दो, एंड दिस इज अ डैशबोर्ड पर्टिकुलरली फॉर दिस फ्रेश मार्केट कंपनी ओनली. ओके, सी 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 AICFO लेवल recommendations ये कंपनी व्यू में है, दिस इज नॉट इन द क्लाइंट व्यू. आपके पास अपनी कंपनी व्यू में ये recommendations भी आ गए, प्रायोरिटाइज अकाउंट्स पेबल मैनेजमेंट, ये अपना जो प्रिडिक्टिव एनालिसिस अपन बात कर रहे थे, ऑल ऑफ दिस हैज कम हियर. ओके, implement aggressive cost control, revenue enhancement, secure short term financing, evaluate. तो जो चीजें हमारा रोल था, फाइनेंशियल रिपोर्ट को एक बार देख के, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देख के, उसको उसके रिपोर्ट्स को एनालाइज करना, फॉर्मूले लगा के, वो ऑलरेडी ये कर रहा है, हमको सिर्फ वेरीफाई करना है, क्योंकि दैट इज व्हाट आवर वर्क इज. ये गलत भी दे सकते, मैक्सिमम टाइम गलत देता है. एंड इसने एनालाइज करके रिकंसिलेशन समरी दे दी कि क्या आपके कैश फ्लो की स्टेटस रहा है, कि जून में इनफ्लो कितना था, आउटफ्लो कितना था. तो आपका कैश फ्लो एनालिसिस आ गया, रिस्क एनालिसिस आ गया, एज यू कैन सी हियर. एंड देन क्लाइंट का जो डैशबोर्ड होगा, उसमें सिर्फ ये व्यू दिखेगा उसको. ये भी डैशबोर्ड आपने बना के दिया है. जस्ट इमेजिन, आप क्लाइंट को जब ये पैकेज सर्विस अपन देते हैं, तो इट इज सो ब्यूटीफुल फॉर द क्लाइंट एंड ऑल्सो अमेजिंग फॉर द क्लाइंट, कि वो आप पे कितना कुछ हो जाएगा, कि एज अ स्मॉल फर्म और अ लार्ज फर्म, वट एवर साइज ऑफ फर्म दैट यू हैव, कि आप आज इतनी एआई पावर्ड सर्विसेज दे रहे हो. ऑल्सो क्लाइंट व्यू में आप एक ऐड कर सकते हो यहाँ पे, कि आप उसको एआई पावर्ड, आप उसको कुछ पूछना चाहते हो क्या, फाइन ट्यून कर दो हल्का सा उसको, कि वो बस लिमिटेड ही नॉलेज उसको देके और वो जवाब दे. बहुत ज्यादा अगर आप उसको एक्सेस दे दोगे कंपनी व्यू का, तो क्लाइंट भी बहुत स्मार्ट होता है. अपन एआई यूज करके कुछ डेवलप कर रहे हैं आज, तो वो भी तो यूज कर ही रहा है ना. सो दिस इज वन डैशबोर्ड का एग्जांपल, जो आप गूगल एआई स्टूडियो से बना सकते हो. तो अभी अपन देखते हैं कि इसने प्रॉम्प्ट बना दिया है. So here is a paste ready prompt for Google AI Studio, which says you are building a lightweight web app called Acrevise Attendance to track staff attendance. Okay, create a mobile first app with 3 roles: clock in out, staff view, manager view, admin view, whatever. इसने, मैंने कहा था ना कि ये बहुत पूरा डिटेल में आंसर दे देगा आपको. यू डोंट नीड टू वेस्ट टाइम ओवर इट, ओवर राइटिंग सच अ बिग प्रॉम्प्ट. आपको आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट पता होना चाहिए. प्रॉब्लम स्टेटमेंट पता है, उसको प्रॉब्लम दे दो, वो आपके लिए प्रॉम्प्ट भी लिख देगा. अब ये थोड़ा, सॉरी, कंट्रोल एंटर, अब ये थोड़ा टाइम लगाएगा. ऑल्सो एनीबडी हैज एनी इश्यूज कि हम इसको ही कैसे अप्रोच करें, इट इज टू फास्ट पेस्ड, देन अगेन आई एम सेइंग कि जस्ट गिविंग यू अ ग्लिम्स, यू कैन गेट इन टच विद मी लेटर ऑन ऑल्सो, कि हम इसको स्लोली स्लोली कैसे प्रोसेस करें, या हाउ डू वी गो अबाउट इट. अभी कोड राइट करेगा, इसमें भी टाइम लगेगा. सो द पॉइंट हियर इज कि हमने प्रिडिक्टिव फोरकास्टिंग समझ लिया, रिस्क मॉडलिंग, डेटा विजुअलाइजेशन, ऑल दैट जो हम पहले एक्सेल पे, पावर बीआई पे करते थे, मैन्युअली करते थे, वो अब हम इस पे डायरेक्टली भी कर सकते हैं. ऑल्सो अगर हमें इतना है कि नहीं, हमें ऑफलाइन करना है, तो आप पाइथन कोड लिखवा लो उससे. यू जस्ट गेट अ कोड रिटन फ्रॉम इट, कि ये मेरी प्रॉब्लम है, अब इस प्रॉब्लम से रिलेटेड रूल बेस्ड कोड लिख दो, जिसको मैं लोकली अपने कंप्यूटर पे ऑफलाइन चला सकूं. जैसे मैंने रीड एक्ट का कोड बनवाया. ओके, एंड देन एनालाइज आपके लोकली उसको. या फिर ये ऐप भी आप लोकली इसको डाउनलोड करके लोकली भी आप चलवा सकते हो इसको, लोकल जो भी आपको उस पे कोड पे बैकएंड पे चेंजेस कर रहे हैं, चेंजेस करके. हाउ विल यू डू इट? ऑब्वियसली विद द हेल्प ऑफ एआई. सो वो, इट इज इन द प्रोसेस, आई विल शो यू. देखो ये कोड हो रहा है, इट विल टेक सम टाइम, जैसे ये बन जाता है विल कम बैक टू इट. So, what are the top capabilities for CFOs? Automated financial reporting, daily accurate updates delivered instantly. So, जैसे अभी हमने डैशबोर्ड बनाया, हमारा डैशबोर्ड उनके जीरो सॉफ्टवेयर या whatever सॉफ्टवेयर they use, जोहो, क्विक बुक्स, उससे अटैच्ड है. नाउ व्हाट हैपेंस इज कि जैसे डेली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ऑब्वियसली वो तो लेजर पोस्टिंग से वहां से डायरेक्टली लेके सारा सब कुछ अपडेटेड रहता है वहां पे. तो व्हाट वी वांट इज कि हमारे ड्राइव से हमारी इनवॉइसेस भी पुल हो गई हैं डायरेक्टली, और उसमें आ गई हैं लिस्ट होकर. उसके बाद वहां से ऑटोमेटिकली हमने एक्शन वर्क फ्लो ट्रिगर कर रखा है, कि उसकी एक्सेल भी डाउनलोड होती है, एक्सेल डाउनलोड होके हमारे डैश में लिंक हो गई है.
एंड ऑटोमेटिकली, या फिर अगर वो आप चाहते हो कि नहीं मेरे को इतना ऑटोमेट नहीं करना कि एक्सेल ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो, उतना एक्सेस शायद वो देंगे भी नहीं एपीआई के वाया। तो अगर वो दे देते हैं वेल एंड गुड, नहीं देते तो नहीं। अगर हमारे पास डाउनलोडेड आ जाती है एवरी डे की रिपोर्ट, तो हम उसको वहां पे भी रन कर सकते हैं। ऑब्वियसली हम ऑटोमेट ही करना चाहेंगे, बिकॉज देन देयर इज नो पॉइंट। सो स्टेप क्या है कि ऑटोमेटिकली जहां से इनवॉइस जनरेट हुई, इनवॉइस पुल हुई, अगर सॉफ्टवेयर से जनरेटेड नहीं है वैसे जनरेटेड है, तो वहाँ इनवॉइस आपके जिस भी सर्वर पे, क्लाउड पे, जहाँ पे जीमेल अकाउंट पे, जहाँ पे भी कंपनी के अकाउंट पे है, वहां से वो पुल होके सॉफ्टवेयर में गई, सॉफ्टवेयर से पूरी एंट्रीज हो गई हैं। फिर उसके बाद वो जो रिपोर्ट्स है, वो रिपोर्ट आपकी ट्रिगर हो गई है आपके डैश में, जो आपकी ऐप में जो आपने बनाई है, एंड ऑटोमेटिकली वो डैशबोर्ड स्टाइल में आ गई है। Possibly some softwares might be giving interactive dashboard अपने उस पे प्लेस पे भी, but not everybody uses the entire capability of all the softwares, क्योंकि पैसा भी लगता है उसका। ओके, कॉस्ट एफिशिएंसी भी देखनी पड़ती है। Then comes predictive cash flow. That's what we did, man, to manage liquidity and plan for shocks proactively. Fraud detection, AI spots suspicious transactions, protecting company assets. कोई हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन हो रही है, कोई कोई कैसी ट्रांजैक्शन हो रही है, तो वो आप उसको फीड कर सकते हो डेटा, एंड यू कैन गेज की क्या चीज है जो कि अननेचुरल है। फॉर एग्जाम्पल 6 मंथ्स का डेटा बैंक स्टेटमेंट अपलोड किया, तो पता चला कि कोई एक सारे पैटर्न है, बट सर्टेन ट्रांजेक्शन आर फ्लैगिंग हाई। ओके, वो आप कर सकते हो। देन स्मार्ट ऑडिटिंग एंड कंप्लायंस, कंटिन्यूस मॉनिटरिंग अगेंस्ट रेगुलेटरी चेंजिंग। आप अपना भी इन हाउस डैश बना सकते हो कि ऑडिट सही से चल रही है या नहीं चल रही है। ऑल्दो ऑडिटिंग इज नॉट द पार्ट ऑफ सीएफओ, बट जस्ट यूज इट एज कंप्लायंस। कंप्लायंस वाली चीज पे अगर अपन फोकस करें, तो कंटिन्यूस मॉनिटरिंग भी आप कर सकते हो। आपका डैश लाइव आपके पास भी चल रहा है, द अदर पर्सन, टीम पर्सनल्स ऑल्सो हैव इट। वो क्या क्या काम कर रहे हैं उसका ट्रैक आपको भी दिख रहा है, एंड जब अपडेटेड कितना काम है वो आपके क्लाइंट को भी दिख रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अभी वोफा में मेनी ऑफ यू वुड हैव अटेंडेड, तो वहां पे सबसे ज्यादा डैशबोर्ड्स चल रहे थे कि कंप्लायंस डैशबोर्ड, कि क्लाइंट को ऐसा डैशबोर्ड दे दो आप कि जहां पे उस क्लाइंट को ये पता रहेगा कि व्हाट वर्क इज डन, व्हाट इज द ड्यू डेट, व्हाट इज फाइल्ड, व्हेन द क्लाइंट हैज टू बी ट्रिगर्ड, या क्लाइंट को कब मेल करना है, या उसको ये देखना है कि अभी ये वाली ड्यू डेट आ रही है, तो डॉक्यूमेंट्स हैव टू बी सबमिटेड, एंड ऑनलाइन डॉक्यूमेंट ही वहां पे सबमिट हो रहा है। तो वो सारी चीजें, वो वो वाले डैशबोर्ड्स बहुत ज्यादा वहां सेल हो रहे थे। तो यू कैन ऑल्सो मेक इट, वो आप एआई की हेल्प से बना लो। वो सब लोगों ने ऐसे किया है। सबके पास एक टेक टीम भी होती है, एंड यू कैन ऑल्सो डू इट, राइट? देन वेंडर कस्टमर बेंचमार्किंग, आइडेंटिफाई बेस्ट टर्म्स पार्टनर्स ग्लोबली। तो ऑल ऑफ दीज आर एआई केपेबिलिटीज फॉर सीएफओस और फाइनेंशियल ऑफिसर्स। ओके, अभी एक बार देखते हैं अपनी ऐप बन गई क्या। ओके, सो इट allows it is asking for the camera record. Okay, उसने अपने मन से कुछ बनाया है, लेट्स सी। ओके, अटेंडेंस ट्रैकर है ना, तो ऑब्वियसली वो अटेंडेंस तो ऐसे ट्रैक करेगा विथ योर, बाय यूजिंग द कैमरा। आई थिंक वी आर इन द रिकॉर्डिंग, सो ये कैमरा अभी यूज हो नहीं पाएगा। हाँ हाँ हाँ, there's a recording going on, which is why, and we are already in the call. But yeah, this is one capability as well. And if you want to see at the back end of how this was made, this bot was made, I can show you the, sorry, not back end, the code part of it. Wait, yeah, supermarket ka. Let me show you the supermarket ka. Supermarket BI dashboard. तो ये पूरा यहाँ पे कोड आ जाता है, और यहाँ प्रीव्यू आ जाता है, which, okay, let it buffer. Till then, let's focus back on our topic. So, what could be the real world AI use cases? You can also, go to these few tools that I'm going to tell you in the end also, wherein आपको templates बने बनाए वहां से मिलेंगे, तो वहां से भी you can catch ideas. So these are some few cases that I've mentioned, but you can take ideas from there as well, कि कहाँ आप अपने भी एआई पावर्ड कर सकते हो अपनी सर्विसेज को। जैसे ऑटोमेटेड इनवॉइस डेटा एक्सट्रैक्शन, इनवॉइस अपलोड हो गई है, ये तो आप गूगल एआई स्टूडियो पे अभी भी बना सकते हो,
just create a that I put an just create an app for me wherein I put an invoice whether in PDF or in JPG or in any format. Okay, एंड उसमें से टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट हो जाए, वो सीआई टेक्नोलॉजी से जो होता है, टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट होके और वो मुझे क्या नेम है, क्या इनवॉइस का नंबर है, क्या डेट है, एंड व्हाट आर द पर्टिकुलर्स, व्हाट इज द एचएसएन कोड, सारी सारी डिटेल्स वो उनको निकाल कर देते। ओके, वैल्यू क्वांटिटी वो सब मेरे को इस फॉर्मेट में वो निकाल के मतलब कैलकुलेट करके दे दे। तो ऑल आई विल हैव टू डू इज जस्ट अपलोड द इनवॉइस और वो ऑटोमेटिकली सारा उसको एक्सट्रैक्ट करके दे देगा। तो ऐसा ऐप आप बना सकते हो, एंड यू कैन ऑल्सो प्रोवाइड दैट टू योर क्लाइंट एज वेल। या फिर आप एक यू कैन क्रिएट अ बैंक स्टेटमेंट ऑटो रिकंसिलिएशन, कि बैंक स्टेटमेंट हमने रीडैक्टेड बैंक स्टेटमेंट भी यूज एंड हमने उसको ऑटो रिकंसिलिएशन पे किया। ओके, सो आई हैव रिसीव्ड फ्यू क्वेश्चंस। Suggest some websites to look and see global opportunities virtual. I'll cover that in the end. Okay, what technical expertise should we possess in terms of tools and software, that I've covered. Also, I'll cover that in the end, the how to approach. Can AI be used for real-time bank reconciliation? Can AI be used to address rising cyber complaints on relevant websites? Yeah, as what I said, whatever problem that you have to ask and discuss that with your AI tool only. See, artificial intelligence. So, okay, understand this is something. Questions, since a question has come, so I can gauge that there is a problem in understanding what artificial intelligence is. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ टूल जिसको ट्रेन किया गया है मिलियंस ऑफ डेटा देकर, ठीक है, और वो डेटा देके उसको समझ में आ गया है कि मैं इस डेटा के बेसिस पे अब ट्रेन हो गया हूँ, इस टेक्स्ट के बेसिस पे ट्रेन हो गया हूँ, नाउ आई कैन जनरेट न्यू आउटपुट। तो आप जब उससे कोई क्वेश्चन पूछोगे ना तो वो उसका सोल्यूशन आपको देगा। देर आर चांसेस दैट द सोल्यूशन इज नॉट अप टू द मार्क, बहुत सारे ऐसे चांसेस होंगे, बट दैट कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन हाउ वेल इज योर प्रॉम्प्ट। आपने कितना प्रॉम्प्ट को वेल डिफाइन करके आपके दिमाग की क्लैरिटी से उसको क्वेश्चन दिया है, तो वो सब बताएगा। जैसे आपने कहा कैन एआई बी यूज्ड फॉर रियल टाइम बैंक रिकंसिलिएशन, यस, दैट्स व्हाट आई हैव आल्सो रिटन हियर, दैट बैंक स्टेटमेंट ऑटो रिकंसिलिएशन इट कैन हैपन। आप ट्रिगर करो ना अपने सॉफ्टवेयर में उसको, कि जहां बैंक स्टेटमेंट आपके सॉफ्टवेयर में है वहां से एपीआई लेकर, क्योंकि अब मैं ऑब्वियसली दीज टर्मिनोलॉजीज आर लिटिल हैवी, बट वहां से आप एपीआई एक्सेस लेके आप अपने ऐप से उसे लिंक कर दो जहां पे रियल टाइम वो आपको रिकंसिलिएशन भी करके देगा। ऑब्वियसली वो करके देगा जहां आपको खुद को अपलोड करने की जरूरत नहीं है, दैट वाया एपीआई वो आपकी ऐप से भी कनेक्टेड है, आपके सॉफ्टवेयर से भी कनेक्टेड है। ओके, obviously AI can be used to address rising cyber complaints on relevant websites, obviously। See, wait, just understand something। जितने भी हमारी प्रॉब्लम्स है वो हमको पहले उसको बतानी पड़ेगी कि ये मेरी प्रॉब्लम है, नाउ हाउ डू आई अप्रोच दिस प्रॉब्लम। फिर वो उसका रिस्पॉन्स भी बताएगा, देन वी कैन आइडेंटिफाई ओके दिस इज डूएबल एंड दिस इज नॉट डूएबल, right? Then is there any course available which is specifically designed for chartered yes, yes, AICA level 1, specially designed for the chartered accountants who've yet no knowledge of artificial intelligence at all till date, can go and do institute level पे हर जगह पे AICA level 1 artificial intelligence for chartered accountants level 1 courses run हो रहे हैं everywhere। पैन इंडिया लेवल पे 500 बैचेस हो चुके हैं। अदर देन दैट अभी इंस्टीट्यूट लेवल 2 भी लॉन्च कर चुका है, हम लोग लेवल 2 भी कर चुके हैं, एंड लेवल 2 भी लॉन्च कर चुका है विच इज अ लेवल एडवांस्ड, जो कैपेबिलिटीज मैंने आपको यहाँ पे भी शो की है, राइट? सो इफ यू हैव नो नॉलेज व्हाटसोएवर टिल डेट, आप एक बार जाके वो कोर्स कर लो पहले। देन सीए जीपीटी भी है एक ऑलरेडी जो इंस्टीट्यूट का है। अगर आपको कुछ जो कंप्लीटली सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए, आई विल शो यू, एक सेकंड में आपको वो बता ही देती हूँ। आई एम टेकिंग दीज क्वेश्चंस इन द बिगिनिंग, sorry, in the middle, is because certain people have some problems। ये GPT ai.ici.org पे जाके, दिस इज सीए जीपीटी, इनके पास एआई एजेंट तक है इनका। सी यहाँ पे एआई एजेंट भी है, नॉट एवरीबडी हैज एक्सेस टिल अभी तक। यहाँ पे आप अपना मेंबरशिप नंबर डालो, आई हैव एंड सी, जितना भी आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है, एक्ट्स एंड रेगुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड, एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड, डिजिटल अकाउंटिंग एंड स्टैंडर्ड बोर्ड, कॉर्पोरेट लॉ, डायरेक्ट टैक्स, देन कॉन्स्टिट्यूशन, डीपीडीपी एक्ट,
इंटरनेशनल जीपीटी भी है, यूएई से रिलेटेड, अभी तक सिर्फ यूएई का आया है, ओके, अरब एमिरेट्स का। देन इंडस्ट्री फोरम है, अगर आपको किसी इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है जीपीटी जो कि आपको पूछना है, तो आप इनसे पूछ सकते हो। यहाँ पे जैसे मान लो कि बैंक्स इंडस्ट्री है, तो बैंक इंडस्ट्री पे आप क्लिक करते हो तो चैट जीपीटी खुल जाता है। नाउ यू विल आस्क ये है क्या। इंस्टीट्यूट ने अपने ऐसे अलग जीपीटीज बना रखे हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ उसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए या उसी पर्टिकुलर नॉलेज बैंक से ट्रेंड है। अगर डिजिटल अश्योरेंस बोर्ड का है तो उसमें सारे डिजिटल अश्योरेंस बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस और डेटा बैंक और नॉलेज बैंक उसमें फेड है। ओके, सो आप इस इधर जाके उनसे क्वेश्चंस पूछ सकते हो। तो इंस्टीट्यूट का भी फाइन ट्यून्ड आपको ऐप है अवेलेबल। ओके, नाउ ओके फाइन। Can AI be used for real-time bank reconciliation? I've answered that. Which tool is best for data analysis? How Claude used for financial reporting? Yeah, Claude is great. You can use it, but there is a limitation in Claude. It'll ask you for a paid version. After while, if you're using Claude, there is a limitation. It doesn't allow you to upload files on your Claude directly, and more than a certain MB, there is a limitation. And if more number of times of, for example, 4 5 number of times, if I've uploaded something here on Claude, and if I ask them after 4 5 attempts, it'll ask for a subscription for me. So first, as I said, try with your just two dummy accounts is enough. We are smart enough, we are intelligent enough to gauge and understand whether it is working for us or not. So you can, using two dummy accounts, it gives you some 10 to 20 questions, which you can ask these tools, for example, Claude. So in a day, so when you ask Claude to do financial reporting analysis for you, or to even generate a financial statement format for you, or a dummy financial statement for you, it'll create it for you. Okay, so for dashboards, for analysis of financial reporting, Claude is great. Okay, it is good, it is advisable. But again, I'm saying, taking before taking any paid version of any software, I will recommend you to first go through it, explore it at least for a month and two, at least. Okay, then suggest, okay, what's which tool is best for AI tools that are free? Suggest some AI tools that are free and paid for chartered accountants. Third, there are no tools specifically for chartered accountants that I am aware of. You can so this AI agent also by CAGPT, which is there. This is also only available for few ones who did AICA level 2. Otherwise, this CAGPT, this is available for all chartered accountants, all members. Members is what I'm saying. They have a student version as well, but for members, this is available. And free and paid tools are, as if I'll tell you, AI, this is a world of AI. Okay. Now, how do they package their services? They give you free credits for days, for few days, for example. So you have a free credit for every day. For example, 10 free credits, 100 free credits, 500 free credits, or however it is. Okay. To ask or to write prompts, and it'll also give you a response. Post that, it expires. Also, in free versions, there are limited capabilities. So, however intelligent are we in prompting, in a free version, there is a limited capability. There, all the tools up to certain point are free. All the tools, I'm saying maximum, chat GPT and these text-based tools, up to certain point, they're free. But post that, they will require a paid version. And why not? We also don't provide any service for free. This is also all the package services that we are talking and discussing here are also not for free. Okay. Then as a fresher, what should we do? I will cover that later on. Okay. How and which tool you use for dashboard for CA analysis? CA analysis? I think, sir, Claude is what we used for predictive analysis. And then I showed Google AI Studio to create an app, which is my own app, to show it as a prototype to my client that I can build that for you. Okay, to do, to create a dashboard. You can create that dashboard offline as well, and you can create that dashboard online as well, and you can create that dashboard using uh, Claude. And in Claude, there is a little hook that if, for example, if I keep asking five more prompts here, it'll ask me to upgrade. Okay, and then 5 hours stuck, I can't talk to it. Then what to do in such a cases? That ask just two questions and then change your chat.
ask in a new chat. Okay. And if you're comfortable with Claude, after, for example, post 6 months, now I'm comfortable, I can buy Claude. Also, people having Perplexity, people having Airtel connection can use Perplexity as well. That is available in your plan only. Okay. How financial frauds can be prevented, highlight risk management and enterprise risk assessment using AI. What are the tools? So, financial fraud, preventing financial frauds, we can create a tool as well for that. Okay, we can create our app for that by giving it a knowledge base, by giving it all the standards that are applicable. Also, which country are you actually wanting to tap in? That is the biggest question. For example, it is about Australia we're talking about. It is about what do you call Canada and USA we're talking about. Okay, and there the disclosure norms are different there. Okay, some work on IFRS, some work on other accounting standards. अलग अलग चीजें apply होती हैं. So we have to follow. We have to first figure out our, since we are tapping foreign market here. The topic is that we have to also figure out that on our end also कि हम कौन से मार्केट पे वो कर रहे हैं एंटर, एंड देन बेस्ड ऑन दैट उसका नॉलेज बैंक को हम लोग डिग आउट कर सकते हैं, उसके बेसिस पे हम हमारा एनालिसिस स्टेटमेंट भी बना सकते हैं. और जो आपका क्वेश्चन है, अगेन आई एम सेइंग, व्हाई आई एम सेइंग दैट वी आर एआई पावर्ड सीएफओज इज, I'm not here to teach you how to actually do an analysis. You are great at that. You are already a chartered accountant. You're great at that. I am telling you how to use an AI tool. And for using an AI tool, you should have a great prompt. So I'll give you an example here. Wait. For making that supermarket dashboard, I gave this prompt. You are an expert market researcher. I want to identify, or you can say I'm an expert. You are an expert market researcher is for the AI tool to know that I've given a role to the tool that you are an expert market researcher. I want to identify the best countries to target for offering fractional CFO services. Please conduct detailed market research and give a structured analysis covering market size and demand. What is so sorry. I've given a different cash flow analysis. Yeah, this is sorry. You are an AI dashboard designer. I want you to create a visual, wholesome business dashboard for a supermarket in Australia. The dashboard must be designed with two distinct views. One is client view, read only status view, sales status, daily, weekly, monthly sales trend, top products and categories, customer experience, invoice and payment status, store performance snapshot. This view is only for monitoring status, no AI suggestions or sensitive insights. Client view. Why I'm telling you this is because this is how your prompt should be. So when you ask me, how do we prevent financial fraud using AI? You ask AI tool only that question. That how do we do that? You get a prompt made first by the chat GPT or any other tool, whatever feels comfortable for you. And then using that prompt, you can go to new chat and get a framework made from there. Okay. So for example, peer review board in our in the institute, they have to follow, they have to go through many standards, and there are many standards on the basis of which they do peer review. Okay, a peer review karna hai, how do we do that? There are so many standards. They can create their own tool giving all that dashboard oh sorry, all that standards ka database to that tool, and they can ask them that please create for me a knowledge bank or a chatbot wherein whenever I upload my firm's data or whatever observations I'm uploading is structure me. In this structure, it gives me results that these are the shortcomings or lacunas. It is trained on the basis of what information I have provided. So when you talk about financial frauds also, you give it all the parameters in which a particular transaction or a company's activities fall into a fraud category, or tell them ki go to these websites or these are the standards that you have to go through. Ya to aap usko PDF do, or you give them the link of the website, and then they will give you a complete pipeline. And if you're not satisfied with the pipeline, then go back to the tool and tell them. So I made an intelligent notices reader for myself locally, wherein I don't want to put it on any online AI tool. I locally installed an offline GPT called Olama Gemma 2B.
and then I use that as in my backend for working on my tool, and I linked it with my front end and my back end. So whenever that there is a notice which is uploaded on my app, which is locally hosted app, my Olama functions, my backend functions, my backend triggers Olama. Olama reads the notice and gives a response, and also gives me a response of the notice. So, sir, if you have a problem, like you asked me a problem, go ahead and ask your AI tool that problem and ask for a solution also, and then present that as a prototype. Okay. So, real time fraud and anomaly detection that we've discussed already. And when we talk about real time, it is about how we are actually automating it also. Automation se hi real time aega. Without that, it is not possible. I'll show you one website where you can pick up. I don't personally use that website, but I'm just telling you from there you can pick up your templates, workflows of what all you can automate. Make.com. Also, anything related to the entire CA services, you can find the GPTs here entirely. Okay, this is industries ka GPT, and this is your particular board ka GPT. पूरा फाइन ट्यून्ड है ये. So you don't need to lurk here and there. And again, don't run for many AI tools. जो text based LLM बने हुए हैं, which is your chat GPT. It is an LLM. It is a large language model trained on millions and trillions of text. तो पहले आप उसी से बात करो, उससे identify करो, be comfortable with it. Don't jump to any tools because there are so many tools. Just imagine tomorrow you make a tool and it is present, and you just tie it up with your with OpenAI, which is ChatGPT's ChatGPT's company. तो जिसने मतलब OpenAI is the company which introduced ChatGPT model. So just imagine. So will everybody just jump to your tool? This is not how it happens. So these are the templates. You can take up your problem statements also from here. This is a long journey. You will have to do it all by yourself, and that is how it should be. So generate chat GPT completions from Google Sheets row. Imagine. So this is complete automation workflow. Add webhook data to Google Sheet. This is good. So मैं यहाँ पे, for example, if I made this supermarket का app, which I was showing, this is a deployed app. Okay. I can add it to a webhook, and webhook से add होके मैं उसको किसी भी database से link कर सकती हूँ. उसके लिए फिर मुझे अलग से कोई database purchase करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. Wait, where did it go? Yeah, make.com. Sync Facebook leads with Google Sheets. Send Gmail email from a new Google Sheets row. Automation ये तो आप normal Google App script से भी कर सकते हो. Then create Google Calendar events from Notion. Summarize emails with OpenAI, then send it on Slack. Okay. Save email attachments to Google Drive. Create a quote with Google Docs for each new row in Google Sheets. So these are some templates that are already there. There is another tool called UiPath. I will not suggest you, I'm just telling you. UiPath Academy. This is great for learning. If somebody's keen on getting something, making or developing something great with it. Then there is N8N for automation workflows. You can automate from here. आप यहाँ से problem statements भी ले सकते हो. Talk with your peers, talk with your people in the organization, and identify your problem statement first. Yeah. An online course on AI for Indian chartered accountants in the okay. Okay.
Wait, I am being asked again and again about which tool is the best for bank reconciliation, which tool is the best. I want to tell you, just imagine all the sub tools that have been made are made using APIs of other models that are there. For example, like ChatGPT and other models. Do not run after one particular tool. I'm again and again saying that you create your own tool, which is why we are talking about AI powered services here. Okay. And how CAGPT can be used and how is it different from ChatGPT? ChatGPT is trained on millions of data and it has varied data. It has data of other, all the other texts, whereas all the other informations also, apart from irrespective of CA also. Whereas CAGPT is primarily trained with whatever is applicable or relevant for a chartered accountant. This is the difference between ChatGPT and CAGPT. These are the questions that I'm taking up, which are coming up. Okay. So I want to tell you, do not just run on tools for this tool, that tool. I will tell you for predictive analysis, yes, Claude is great. For reconciliations, also Claude is great. You can use Claude for financial statement analysis as well. And you can create your own tool also. That's what I'm again and again saying. Because again, there is super sensitive data uploading. How much data will you keep uploading there? There will be a limit, no? How much data can you upload? And that too manually only you'll upload or make.coms if you use, you can trigger and automate. This is for automation. Ye connections hi ho rakhe hain. These are all connections. Okay. These are all getting connected. So just understand if all of these are getting connected, and for example, you want to take a prompt or take a problem statement from Chat GPT, just like here we had a particular generate Chat GPT completions from Google Sheet rows or Chat GPT ka problem statement we took from that, and then we linked it to another app, or for that matter, Claude. But what about data privacy also in the end? So let's move on. Do not run after just one tool, and if still somebody has any issues regarding what tools, they can contact me later on also, and I can tell you that these are the particular tools that you can go after. But in AICA level 1 also, we can give you a number of courses, that tools, sorry, that are available, but you only will have to explore, and how many tools will you be paying for in the end, you know so just try and derive your answers from the most available and the primarily available models, is what I want to say. Yeah, for Excel analysis, there is a tool which I'll share in the PPT as well in the end, wherein it will give you an analysis online only for BRS as well. Okay, automated drafting of routine letters that can be triggered at Gmail as well. All the use case cannot be practically shown here because of time limitation. How to use AI for global expansion. Some of you asked this question, wherein as a fresher, what do we do? And what websites are available? Do not run after any websites, although there are so many websites which do web scraping. But let me tell you, there is no clear law regarding web scraping, whether it is, whether web scraping is legal or not. But in these websites, all LinkedIn and all the social media websites, they have specifically said that you cannot use the data, even if it is publicly available, of our clients or users for your commercial gains. Okay. So there are so many tools which can, scrape data from LinkedIn as per your requirement, that, these are the people from AI tool only. You can get that made from AI tool, from ChatGPT, for example. ChatGPT go, if you say that I want to scrape data, these are my requirements, this is the service that I want to provide. It'll scrape data, but then that is not ethical, let me tell you. So just go the old school way here. This is like how we started our practice back in the day, by networking. Start going to these conferences. If virtual conferences are available, start going to virtual conferences, attending these conferences, start connecting with your peers and friends who are there in that country. And you can approach them for small time projects, or you can showcase their work to them. This is how it builds. Start gauging and making a library. For example, notebook.lm is one library, is one tool wherein you can create a chatbot where you can have your own knowledge bank and library. Start making a library of any country.
wherein you want to enter. So first do a market research via AI tool, and AI tool, the name which you'll again ask me, you can use it with ChatGPT also. You can ask ChatGPT to do that research for you. You can even ask Perplexity, because again, if you're an Airtel user, it'll be free for you. So you'll have a pro version, sorry, available to you. So you can ask the Perplexity also to do that market research for you. That which country is most feasible for you, and you have to tell that Perplexity and chat gpt that this is my time zone comfort, or this is what I'm great at, and this is what I want to enter in. Do that research first. Also, country, maybe you have to select a specific city. You can't just run into any country like that okay, I want to provide services to USA, now let's start sending cold emails of knowledges. Obviously we can't market. So cold emails, and why take risk? If CFO services also, we shouldn't market. So cold emails we've started sending, no, don't do that. First identify a particular city of that country, then identify a particular small size startups, or small scale businessman of a particular industry. They are so specific, because when I first approached these people, they were more of that, what particular industry are you serving? They're very particular about it, like how we are particular about things. Okay, so do your market research first, then just make a library side by side. I'm telling you a tool, you can write notebook.lm. Notebook.lm is a tool to make your own chatbot. Yeah, say you can log in, and this allows you to create a chatbot giving your knowledge base. So if you've selected a country, a city, whatever, and whatever the local regulations and all those rules that are applicable in that country, you want to enter into that, you just start creating a database of that, start uploading it there, and then you can have your own knowledge bank, and you can talk to your chatbot like that. Okay, obviously, AI models will help you also decide pricing and strategy. Completely don't rely on that. Also, ask your peers regarding that. Okay. Also, what is important is b- create a LinkedIn presence. That's extremely important. If you're not on LinkedIn, start having a presence on LinkedIn, because LinkedIn gives you a lot of work. It does. It gives you a lot of work. Then enable remote CFO leadership with real time analytics dashboards, just prototypes that I've given you. And again, what tool, what real time, how can we make it? As I said, start exploring with simple chat gpt, perplexity, grok, and these questions that you're asking here, you can ask them as well, that I want to solve this problem in a real time basis, how can I do that? And it'll start guiding you. This is what in a detailed level is taught to you in AICA level 1 as well. Okay, again, chatbot ke liye there is another website, which is another tool, which is botpress, botpress, botpress. This for chatbot, you can create your knowledge bank. For dashboards, Google AI Studio is great. It'll give you an app like structure. Okay, and but Google AI Studio will have to be in the build. You go in the build section, and then it'll more of like the app structure. So stick to Claude first. Okay, and for pitch decks, napkin.ai, as we discussed in the beginning. For meetings management, we had Auto AI and Calendly and Fireflies.ai. Chatbots we've discussed. For creating app, we have Lovable. For creating a website, also an app, also we have Lovable for creating that front end. Then we have Google AI Studio. Then we have Replit with us. Wait, I might be faster in my pace. Lovable Dev. Lovable.dev. This is for creating your front end or a website. You can create any website that you like. For example, I can show you here that, yeah, also an online presence is extremely important. Outside people really want to know whether you have a website or not. So it is also important. So you can, for example, this is the front end that has been made. Now you can get it linked by getting in touch with a part-time engineer or any other engineer, so that the costing will also differ in that way. You know, for example, you get a complete website made outside, and one you can do it on your own, also exploring an AI tool is what we're telling. Because now chartered accountants are making their own websites. It is not new. Okay, create a website for
virtual CFO firm named, for example, ad hoc. Sorry. Okay, ad hoc. Providing all CFO services in, wait, Australia. I have taken a complete bigger, broader. For this, you can get your prompt made by ChatGPT as well. I am writing just a one word prompt. You can get it made by ChatGPT as well. So this can, okay. So it'll give you a front end of how a website can be made in just minutes. It does that work for you. Okay. Then for linking a database, you can link to Superbase, Firebase, or you can have your local SQL tables as well, your SQL database locally as well. But then we are not that equipped and we don't want to go that way. Okay. For front end, we have not just Lovable, we have we can get our code also made from Tray. Mostly engineers also use this. Claude makes the best codes, best codes. If you want to get offline Python codes also made, you can make that. And for example, you want to identify financial frauds. For example, we were talking about high risk, high volume or high value transactions. Okay, you can get a Python code written by Claude that just write up a Python code because these are the transactions, or these are the high value transactions that shouldn't reflect or that should reflect in a particular statement when I upload the statement. Or, uh, for example, a login time or logout time, or a change has happened in the system. For example, a change has happened in the system, a login at the wrong time had happened, or a authorization access has happened. So you can get a code made by Claude for that. That these are my parameters, and I want a code to be made whenever I run an Excel file or whenever I run whatever file, whatever type of file that you have. It should be able to flag those for me. You can get a code made. You can get that code made from Tray also, TRAE, sorry, AI. Okay, so this is all about the tools. There are numerous tools. I'm again saying start exploring and start identifying which tool actually works for you. So, what are the challenges? Again, data security, govern sensitive data with strict access, and AI ethical tools. Yes. Take a paid subscription of any tool if you want to use it very deeply with a company's data, and do not upload without redacting. You want to code for the redact, I can provide you a code for redact as well that you can run offline. Okay. Then skills gap, upskill teams with structured AI training. If you think that you just have access, you'll just have an access to a tool and you will just become expert, or you'll start providing a dashboard or a real-time analysis just on the basis of a tool, that is not going to happen. You'll have to really upskill yourself. Online courses, as of now, what I know, cannot endorse any other course other than what our chartered accountancy here is. And or you can access YouTube videos which are available there. I really can't endorse any course here. Regulatory oversight, collaborate with compliance to ensure, obviously, responsible AI use. We have to see that compliance is what our field is. We have to see that there shouldn't be in a country also we're operating. For example, there are so many countries, there might be a ban on use of AI. Have to be aware of that and start to ask your AI tool only, wo bata dega, chat GPT, for example. Human in the loop means whatever the tool has made, just do not sit at the back and you're like, okay, it is done. Now financial fraud, my tool only, even if it is rule based, it has detected. Now I can sit at the back and be assured of it. Okay, for example, NPA flags have been done. Don't. You have to go through it. That is what you will have to do.
So key takeaways, we know that it is the need of the hour, and we have to upskill, and we have to use smart tools, either by creating ourselves or using what is available in the market. So thank you so much for listening to me and being really patient. You can connect with me with this link here, or if you have deeper questions of what other tools, because of shortage of time, you can connect with me. Thank you, ma'am. I think you have answered all the questions very well. So, shall we close? Yeah, yeah, and my end you can close. So, thank you, ma'am, for the valuable insights. Clearly, the future CFO will be one who combines financial acumen with technological foresight to navigate global opportunities. On behalf of Development of International Trade in Services and World Trade Organization Directorate of I hereby extend my gratitude to all the 527 participants as well as our speaker. Thank you, ma'am. Thank you so much. Yes.